सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ना मुझे बात करनी ही है। Good morning, everyone. I think most of the participants have joined, and some of the participants. We should start. Jury members have also joined. Principal sir has also joined. So, worthy principal sir, GCW Parade, Dr. S.P. Saraswat, respected jury members, coordinator of the event in his absentia, Mr. Nisar Ahmed Bhatt, Deputy Director of Nehru Yuva Kendra, fellow colleagues and dear students, I, Dr. Gurpreet Kaur, Assistant Professor Chemistry and NSS Program Officer of the college, welcome you all to this District Youth Parliament for the District Jammu, proposed by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, organized by our college in collaboration with Nehru Yuva Kendra Sangathan Jammu. Now, I would request Principal Sir for a formal welcome address. Hello, thank you, Gurpreet. Are you able to hear me? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. So, worthy jury members for today's program, namely Dr. Saranjit Kaur, faculty from Center of Women's Studies, University of Jammu, Mr. Nisar Ahmed Bhatt from Nehru Yuva Kendra Sangathan would not join us at the moment. Professor Meenu Mahajan, Principal Government College for Women, Udhampur. Ms. Natasha Galsotra, Joint Director Tourism. Dr. Kamna Gorka, State Medical Officer, State Health Agency, Ayushman Bharat. And Mr. Tahid Rufai, Entrepreneur, Startup Consultant, MD, TR Group of Companies. Student participants, faculty, and student audience, I extend a very warm and hearty welcome to all of you to this great opportunity, to this great event, which is being organized at district level to start with, and gradually it will be shifted to organized at divisional level and then at national level. This event is going to provide a wonderful platform for our students to share their ideas, to interact with each other, to get apprised with the working of the parliament, and get appraisal about the grassroots democracy, and get awareness on burning and important issues that we face today. It also provides the students an opportunity to develop their personalities and get acquainted with various topics. The topics that have been chosen by the organizers are simply too important for us. All of us should be aware of these with these events, with these topics. So, not taking much time, I once again welcome you all to this event and request Dr. Gurpreet Kaur to proceed with the conduct of the parliament. Thank you very much, sir. Thank you very much. First of all, let me give you a background of the program. The Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, shared the idea of youth becoming the voice of India in his Mann Ki Baat address on 31st December 2017, where he said, I got an idea whether we could organize a mock parliament in every district of India, where the youth between 18 and 25 years could sit together and brainstorm about new India, find the ways and chalk out plans. How could we realize our resolves before 2022? And here we are in this 2022. How could we build an India of the dreams of our freedom fighters? So he categorically spoke about
giving a chance to the youth to put forth their views on various issues concerning the country. He also said, I propose that a mock parliament be organized comprising one young person selected from every district who would participate and deliberate on how a new India could be formed in the next 5 years. How can resolve be transformed into reality? The Honorable Prime Minister reiterated his desire to organize the district youth parliaments in his address at the time of inaugural of 22nd National Youth Festival on 12th January 2018. Thereafter, Parliament Festival was organized in January-February 2019. And here, because of the pandemic that we are facing, we are forced to organize this program at district level and at the state level with the virtual meetings. And most probably, the National Youth Parliament at the national level would held in offline mode. The objectives of the National Youth Parliament is to hear the voice of the youth, to encourage the youth to engage with the public issues, understand the common man's point of view, to develop and enhance their decision-making abilities, to obtain and document their opinions on the vision of New India, to make available their views to the policymakers and implementers to take it forward. So we are at the very first stage of organizing the district youth parliament for the Jammu district. Thereafter, the students who would be selected at this level would participate at the regional level, and at the regional level, they would be competing among themselves, and for the state level, we'll be selecting only 3 students. So let me introduce our esteemed jury members. First of all, we have Professor Meenu Mahajan, Principal, Government College for Women, Udhampur. Dr. Sharanjit Kaur, Faculty, Center of Women Studies, University of Jammu. Ms. Natasha Kalsotra, KAS, Joint Director Tourism. Dr. Kamna Gorka, State Medical Officer, Ayushman Bharat. Mr. Tahir Rufai, Young Entrepreneur, Managing Director, TR Group of Companies, and a Startup Consultant. I welcome you all over this for the jury. Ma'am, I want to, I want to give you some idea about the evaluation. There are 4 parameters for which every students need to be evaluated. I have already shared the sheet with you. First one is articulation, then clarity of thought, content knowledge, and demeanor. Every students will be graded on 25 marks for every category, and out of 100, the cumulative score would be shared by the jury. There are some topics that are specified for the function. First one is Incredible India. Then we have Skill India, Digital India, Beti Bachao, Beti Padhao, Swachhata Abhiyan, and Digital India. The students will be speaking on these issues and will be upgraded. So I guess all the students must have joined. Jury, please confirm if you have received the participant's name as well as the evaluation sheet. Yes, we have got it. Yes, ma'am, we have got it. Every student will be getting only 4 minutes for the topic, only 4 minutes. Every student need to just give their name before speaking and their topic. Nothing else is to be mentioned, their name and their topic. So I think we can proceed with the permission of jury. Sure, of course. Yes, ma'am, please. So first of all, we have Miss Shaina Singh. She will be speaking on Skill India. Shaina, are you there? So it's your turn. Please stick to the time limit. Ma'am, am I visible? Yes, you are visible. Yes, you are. Go ahead. Okay, ma'am. So shall I start? Yes. The more importance we give to skill development, the more competent will be our youth. 60% of our population is youth. 70% of them are educated, and only 20% of them are employed. Why? Where are we lacking? A very good morning to honorable jury members.
audience and my fellow contestants. My name is Shana and I'm here with my topic Skill India. The lack of proper education and training restricts the opportunity of self-advancement by limiting the access to well-paid employment. Eventually, this prevents from making an influential contribution to economic growth. Thus, education and training are recognized as fundamental requisite for breaking down the ecosystem of poverty. Skill development is no longer a matter of choice. It is imperative to adapt, to survive, and to succeed. Our Honorable PM Narendra Modi ji launched National Skill Development Mission of India on 15 July 2015 to train over 40 crore people in India with different skills by 2020. It is managed by National Skill Development Corporation NSDC, which aims to create opportunity for the development of talent within the country and improve the overall scope and space for underdeveloped section. Numerous schemes launched under it are Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana, Skill Acquisition and Knowledge Awareness of Livelihood Promotion Sankalp, Udan, Standard Training Assessment and Reward Scheme STAR, Polytechnic Scheme, Vocationalization of Education, and many more. Literacy is not restricted to education alone, but it also broadens the concept of skill. It comprises of technical, transferable, vocational, and digital skill, and the other requirements of employment and livelihood, which eliminates the skill gap. E-skill programs, which provide anytime, anywhere skill beyond the boundaries of time and location. Under it, 18.95 lakh aspirants have been trained, out of which 2.77 are skilled and self-employed, 15.83 are waged employed, and 0.3 are apprentices. A survey states only 25% of Indian workforce has undergone a skill development program in India. India needs a much higher skilled workforce. Fundamentally, skill development is the time individuals invest to improve their proficiency to stay future ready. It is the ability to complete a task with higher level of success. It leads to advancement of proficiency, economy of time, increase in performance, innovation, and personal development with ensuing economical diversification, technological evolution, and overall development of India. According to World Trade Organization, our GDP level can increase 3 to 5% by 2035 with skilled workforce. Skilled youth can establish themselves as entrepreneurs and create employments for others as well. The Mudra Yojana provides easy loan for self-employment. The foundation of effective, efficient, and sustainable skill development ecosystem has been laid over a few years. It's time to build upon it. The distance between a probable future and a possible future is always telescoped by resilience and determination. The task is Herculean, but is not impossible. Under the Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana, more than 1.25 crore youth have been trained. And this skilled workforce has helped to effectively fight against COVID pandemic. Mission of skilling, reskilling, and upskilling the youth should go on relentlessly to develop our country. Let us join hands to make India the skill capital of the world. And the bottom line is, our country in the world should be identified as Skill India, not Scam India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Shaina, any of the jury member would like to interact with Shaina, or shall I go to the next speaker? Okay. So the next speaker is Ms. Akarshani. She will be speaking on Incredible India. Akarshani, please put your video on. Am I audible? Yeah, you are audible. Shall I start? Yes, please. Okay.
I am from a country which has a unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and rich history. I am from a country where yoga is originated. I am from a country which is called a land of unity in diversity. A very good morning, honorable judges and my co-fellows. I am Akarshni and my topic is Incredible India. India was incredible. India is incredible. And India will always remain incredible. So, Incredible India is the name of an international marketing campaign initiated by the Government of India to promote tourism. Our India is incredible because of its beautiful mountains, lakes, forest, culture, languages, and whatnot. In my schooling life, my every morning starts with the prayer and pledge as India is my country. I love my country. One day, a question instantly popped up in my mind. Do I really mean it? The pledge I have spoken since first day of my school, or I just say it because everybody is saying it? Well, the answer came as soon the question. Yes, I love my country. India, a land of all seasons. As a vast country, it includes desert, evergreen forest, snowy Himalayas, the natural beauty and the cultural diversity. Echoes the rich tradition. It is a place where you can experience spirituality and solitude all together. And let me tell you, the best thing about our country is here it is believed that honoring a guest is equals to honoring a god. Also, India has 22 states and India is the largest democracy in the world. Okay, it also has Taj Mahal, Qutub Minar, India Gate, Red Fort. Okay, so we already knew this, right? That we what India is famous for, what is India called, and what we don't know about is there are still some unexplored beauty in our country which nobody is aware of because they are not hyped and nobody even knows that those places even exist. For example, let's talk about Jammu and Kashmir. Everybody knows about where Kashmir is, how pretty Kashmir is, which indeed it is. People from various states and countries visit Kashmir with their friends and families. Same in J&K is also a place called Bhadrawa. It lies in Doda district of Jammu division. I'm not saying that nobody knows this place. I'm saying that very few people who are not from J&K knows about Bhadrawa. There are many places in Bhadrawa which are not even explored yet, but they're extremely beautiful with breathtaking views and greenery, but regretfully, it has not been developed. Hopefully, things will change in future, but people are still waiting for it. We all know how incredible J&K is. Sadly, it's unexplored. There are many factors why it is. Biggest factor being terrorism. Tourism in Jammu and Kashmir is getting affected because people are scared to visit to state for it being under the influence of violence, curfew. Jammu region is very much unexplored and underrated. Jammu region is very peaceful and beautiful, but hardly people knows the areas to visit there. And how about to explore those beautiful places and stop hyping tourist spots which are already hyped? Find beauty in our country which is underrated and make India more incredible. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Miss Priya Thakur. She will be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Priya, please put your video on. Yeah, your voice is not that audible. Ma'am, audible हो? Yeah, but Ma'am, thoda sa zor se. visible? You are not visible yet. Not visible to me at least. I don't know if anybody else can see you. Have you put your video on? Yeah, you're visible now. Speak. Audible? Yes, yes. Audible, but please a little bit
ओके मैम, ओके मैम। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रिया ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। 1961 में प्रति 1000 पुरुषों पर 976 महिलाएं थी और 2011 में केवल 918 महिलाओं की गिरावट को देखते हुए महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 100 लिंग गंभीर जिले जहां शिशु लिंग अनुपात में लगातार गिरावट हो रही है, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। इसमें जनसंचार अभियान को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी संस्था में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। बेटियों को विद्यालयों में दाखिला दिलवाया जाएगा। गंभीर रूप से शिक्षा का पालन किया जाएगा और महिलाओं के लिए शौचालय भी बनाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल बेटियों को बचाता नहीं बल्कि बेटियों को सशक्त भी बनाता है। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन मंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, लिखा सुख मंत्र हो। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं का सभी क्षेत्रों में उत्थान, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाना और अपने सभी निर्णयों को स्वतंत्रता से ले पाना। इसी आधी आबादी को आगे लाना महिला सशक्तिकरण का परम उद्देश्य है। आज भी भारतवर्ष न यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का पूजन किया जाता है वहीं देवता भी निवास करते हैं का आदर्श लेकर चलता है। आज हमारे देश के हर उत्पादक क्षेत्रों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है। खेल कूद विज्ञान विकास तथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाएं सशक्त रूप से भाग ले रही हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, विया ललितांबिका, रितु करिधल, अनुराधा टीके, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिलाओं का साक्षरता दर 70.3% है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सफलता है और वह दिन भी दूर नहीं जिस दिन साक्षरता दर 100% से भी अधिक होगा। इनता के पश्चात महिलाओं के लिए समाज में शिक्षा का फैलाव किया गया और उनके धीरे धीरे बढ़ती आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव दिखे हैं वह भी कम नहीं और उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। महिलाओं के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम, उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम, ना जाने कितने ऐसे दंडात्मक कानून हैं जो महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित बनाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार जांच अधिनियम को लागू कर रही है और राज्य सरकारों की जरूरत है कि वे क्लिनिकों में अपना लगातार निरीक्षण बनाए रखें। कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण है दहेज प्रथा एवं हमारी गलत अवधारणा कि वंश केवल पुत्र से ही आगे बढ़ता है, पुत्री से नहीं। भले ही वे बेटा बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम ही क्यों ना भेज दे। ये समझना और ये समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यदि बेटा एक घर का चिराग है तो बेटी 2 घरों की रोशनी। इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा हो रही है। आज महिलाओं के साथ वह एक पांव घर से बाहर तो है उनका, लेकिन एक पांव अभी भी घर की चौखट के अंदर है। साक्षरता दर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान उनका बड़ा तो है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज जरूरत है महिलाओं को सशक्त करने की, शिक्षित करने की, उन्हें जागरूक करने की। हमारी सरकार जो महिलाओं की वृद्धि के लिए लगातार आगे बढ़ रही है, महिलाओं को खुद के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की और अपने लिए खड़े होने की, ताकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को एक नई राह पे ले जाया जा सके, क्योंकि यदि एक बेटी पढ़ती है तो आने वाली 7 पीढ़ियां पढ़ती हैं। अंत में, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू किस लिए हताश है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। Intimate the esteemed jury members that there can be 3 languages which may be used by the participants. It may be English, it may be Hindi, or it may be local language. So now we have Miss Anisa Bashir. She will be speaking on Digital India. Anisa, are you there? Yes, I'm
able to see you in the participant list. Please put your video on. Yeah. The world used to think we are a land of snake charmers and black magic. But our youth has surprised the world with its IT skills. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. A very refreshing morning to everyone present here. It's exciting to be a part of this conversation. Myself, Anisa Bashir, and my topic of concern is Digital India. Digital India is a campaign started by the Prime Minister Sri Narendra Modi on July 1st, 2015 under the motto Power to Empower. The campaign aims to improve the country's technological advancements. It aims to provide the high-speed internet and will ensure that every citizen of this country has an electronic device like a mobile phone. This initiative also aims at connectivity of the rural India to urban India with a high-speed internet connection. The main objective of this Digital India is to make government services essential for everyone and easily available to the citizen electronically by improving its online infrastructure. There are three main core components under this Digital India campaign. The first one is creation of digital infrastructure. The second is delivery of digital services. And the third and most important is digital literacy. So starting with the creation of digital infrastructure. As we all know that digital infrastructure is very necessary, especially in the rural areas, because the interior regions of the countries either have very little or even some of the areas lack electronic connection. The Bharat Broadband Network Limited is responsible for Digital India project. BharatNet aims to connect 2,50,500 Gram Panchayat across the country to a high-speed internet network via optical fiber network. As a part of this program, around 4 lakh internet points will be established all across the country. Now the next is delivery of digital services. A major component of Digital India campaign is to deliver digital service all across the country. All ministries would be linked under the scheme and all the departments will be able to reach out to the fundamental services like healthcare, banking, education, etc. Even the daily monetary transactions of the people were also converted into digital mode, and all they need is they will be able to send everything at the doorstep. Now the most important one is digital literacy. It is the most important core component of the Digital India campaign. For full participation of people, the competency they need is to have digital literacy. The basic behavior, knowledge, skills are required for the use of digital services. There are around 749 million internet users across the country. Despite of this large number of the users, there are still around 40 to 45% users that are not digitally aware. They have to use cyber cafes to bridge the digital divide. Desktops, PCs, laptop, tablets, and smartphones are the devices used for the purpose of communicating to the people. The mission of digital literacy is to cover over 6 crores of rural households. Its main focus is to prepare India for a knowledge future. The main objective is to target the 9 pillars of Digital India that are broadband highways, universal access to mobile connectivity, public interest, e-governance, e-kranti, global information, electronics manufacturing, and early harvest program. There are several digital frameworks that are established under this campaign, like Umang, Bhim, e-hospital, Accessible India, mobile app, e-Pathshala, and many more. Now, I'm going to put forth my personal review. I chose my topic as Digital India because in today's world, every developed country of the world is modernized and works on the cashless transactions.
And in such a phase, Digital India promotes cashless transactions in our economy as well. As a youth of this country, it's our responsibility to create awareness among people regarding digitalization. We can organize seminars on ground level to increase the digital literacy among people. In the world of digital quality, India stands at 59th rank out of the 110 countries, whereas United States stands at number 1. To make India at the top of the list, we have to analyze the digital scenario of the countries like USA, Singapore, and find the reason behind where are lacking. Conference, workshops can also be organized extensively to involve youth in this Digital India campaign. Training and awareness sessions should be taken up in schools, colleges, and universities so that we can differentiate between pros and cons. I think the Ministry of Education should add digital skill as a subject in the school education. Many youngsters are using the technological knowledge for harassing, stalking, and trolling people. Cyber hacking has also become an addiction to the youth. This is all because of the lack of awareness of digital literacy. In the end, I would like to quote the words of Sri Narendra Modi. Digital India is not an elite concept anymore. We have to use this idea to revolutionize health and education in India. Thank you and have a nice day. Thank you, Nisa. Thank you very much. Now we have Miss Isha Chaudhary. She'll be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Isha. बेटियों के बिन जीवन बेकार होता है, बेटियों से ही तो घर परिवार होता है। तारों में चांद का मुखड़ा होती हैं बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती हैं बेटी। नमस्कार, मैं ईशा चौधरी आज इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ। कल मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मुझे बेटियों के लिए एक कविता पाठ करनी है, तो मेरे बाबा ने Sorry to interrupt you. Beta, please put your video on. We are not able to see you. नमस्कार, मैं ईशा चौधरी आज इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ। कल मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मुझे बेटियों के लिए कविता पाठ करनी है, तो मेरे बाबा ने बहुत बड़ी बात बहुत ही कम शब्दों में कह दी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। शर्त लगी थी दुनिया की सारी खुशियों को एक शब्द में लिखने की, शर्त लगी थी सारी दुनिया की खुशियों को एक शब्द में लिखने की, तो वो किताब ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सुनकर आपके मन में जरूर ये बात आती होगी कि जितनी भी विकास के लिए व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं वे बेटियों के लिए क्यों होती हैं, बेटों के लिए क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों को हमेशा से ही बेटों से कम आंका जाता है। पुराने या वैदिक काल से चले आ रहे शासन से हमें यही पता चलता है कि नारियां हमेशा से क्रूरता व अपमान का शिकार हुई है। द्रौपदी व सीता माता तक इस क्रूरता का शिकार हुई है। आए दिन हमें बेटियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न अपहरण के मामले सुनाई देते हैं। इन्हें हम बड़े ही आसानी से सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये आंधियां अब मेहरबान नहीं होंगी, ये आंधियां अब मेहरबान नहीं होंगी, दिए की लो को बढ़ाना होगा, इससे पहले कि सारी कश्तियां डूब जाए, बेटियों को बचाना होगा। नारियों को स्वस्थ, इज्जत, सम्मान व ज्ञान दिलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी ने 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से की। इसकी शुरुआत हरियाणा से होने के पीछे ये कारण था कि वहां पर लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों से काफी कम था। वहां पर 1000 लड़कों की तुलना में 700 लड़कियां थी। इस शुरुआत में देश के नामित 100 जिलों में लागू किया गया। बाद में यह अभियान पूरे देश में चर्चित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना भारत के 3 मंत्रालयों द्वारा बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित की गई। ये योजना 100 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग के साथ लागू की गई। समाज में हम बेटा बेटी के इस अंतर को खत्म करने के लिए स्वयं एक मुहिम चलाते हैं और लोगों की सोच को
सकारात्मक बनाते हैं। अगर हमारी सोच ही नकारात्मक होगी तो कोई भी अभियान हमारे लिए सफल नहीं होगा। तो यूरोप लोगों की बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच लाकर हम इस बाल लिंग अनुपात को बेहतर बना सकते हैं। अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। बेटियों से ही आबाद होते हैं घर, बेटियों से ही आबाद है घर परिवार, अगर ना होती बेटियां तो थम जाता संसार। धन्यवाद। Now we have Manshu Manhas. She will be speaking on Swachh Bharat, Swasth Bharat. Manshu, are you there? Yes, ma'am. Yes, please put your video on. You can start now. A silk dress does not mean clean undergarments. You do not get anything clean without getting something else dirty. Mahatma Gandhi never compromised on cleanliness. He gave us freedom. We should give him a clean India. Good afternoon to all of you present here, respected chief guest and all my dear friends. Today I am here to present my views on the topic Swachh Bharat, Swasth Bharat. The Swachh Bharat Abhiyan has been selected for awareness and improvement among the people of India. Cleanliness is not only the government but also our campaign. By participating in it, we can contribute towards making a clean and healthy India. Good health comes from cleanliness and hygiene. So, Swachh equals to Swasth Bharat, and only a clean India can be a healthy India. This campaign has been launched by the Prime Minister Narendra Modi to tackle the problem of cleanliness across the country. Father of the nation, Mahatma Gandhi had a dream of a clean India and always strive for it. Swachh Bharat Abhiyan is cleanliness campaign was run at a national scale and encompassed all cities districts at both rural and urban levels. This project seeks active participation in individuals of any age group from all corners of the country. Swachh Bharat Abhiyan's goals include access to personal toilets, eliminating defecations in the open, raising public awareness about cleanliness, using toilets among ordinary people, encouraging change of behavior, keeping villages clean, proper disposal of solid and liquid waste due to poverty, lack of education, lack of cleanliness, and other social problems. India is still a developing nation. Moreover, the Indian government intends to offer all the cities with hand pumps, proper drainage system, bathing facilities, and more. This will promote cleanliness among citizens. In other words, Swachh Bharat Abhiyan will help in proper waste management as well. When we will dispose of waste properly and recycle waste, it will develop the country. Being about and important in the general quality of life. Some of the technologies that can help in Swachh Bharat mission are increases our reliance on solar power, invent more in recycling supply chains and infrastructure. There's a type of road building material that can help in reducing NOx emissions, adopt these solid waste management technologies, tips to have a clean society. Use dustbins, ask your child or other children to keep the society clean, stopping the use of polythene bags, plant a spelling, save water, stop littering and dispose garbage properly, you sort your garbage, maintain hygiene, reuse and recycle, say no to plastic. And at the last, I want to say that cleaning it is health, that is wealth, and not pieces of gold and silver. Thank you and have a nice day. Manshu,
Our next speaker is Miss Muskan Chip. She will be speaking again on Swachh Bharat, Swasth Bharat. Muskan Chip. Beta, put your video on. Hello. Hello, Gurpreet. Hello. Hello, ma'am. Am I not audible? Gurpreet. Hello. Hello, Hello, ma'am. Gurpreet. Yes, Just ma'am. ask the students to put their video on. 2 लोग अभी चले गए, वीडियो ऑन नहीं था. Request all Gurpreet, the students to put your video on. Ma'am, I'm audible. Yes, Muskan, you are audible. ओके मैम. जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा. सुप्रभात, मैं मुस्कान जीडीसी मठ की छात्रा आपके समक्ष स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के विषय पर बोलने जा रही हूँ. स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य है भारत को साफ बनाना, लोगों में जागरूकता लाना कि साफ बनना ही हमारी पहचान बनेगी. चाहे हम अपने घरों को जितना भी चमका लें, जब तक हमारा देश नहीं साफ होगा हमारी पहचान वही रहेगी. इसलिए देश को अपना घर समझकर सफाई में अपना योगदान दें. जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक है अपने आप और अपने आसपास को साफ रखना. यदि कोई देश स्वच्छ है तो नागरिक स्वस्थ है और हमें इस राष्ट्र को स्वच्छ बनाना है. स्वच्छता सीधे किसी देश के विकास और सफलता को प्रभावित करती है. अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमें कुछ गतिविधियों को रोकना होगा. जो स्वच्छता को नहीं अपनाएगा वह बीमारी को अपना घर बनाएगा. सड़कों पर कचरा और अशुद्ध पदार्थों के निपटान से गंभीर खतरा होता है. इसके अलावा यह हमारे देश की सौंदर्य रूप से बदसूरत बनाता है. जैसे कि हम जानते ही हैं कि भारत को सौंदर्य और का रूप कहा जाता है. यहाँ कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा गया है, परंतु जब मनुष्य इसे नष्ट कर रहा है तो ये सौंदर्य और ये स्वर्ग आज हमें नहीं दिख रहा है. आज हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नहीं दिख पाएगा. पृथ्वी पर मौजूद लोगों और अन्य जीव प्राणियों के वातावरण के कारण बीमार हो रहे हैं. इसलिए भारत को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए हमें एक समय की जरूरत है. देश भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में एक अभियान शुरू किया था जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा गया था. गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत रखने का एक लक्ष्य बनाया था और देश की ओर से गांधी जी को और क्या ही श्रद्धांजलि हो सकती है. से भारत को मुक्ति दिलाने से इससे प्रथम और कुछ नहीं हो सकता. चलो सफाई को एक आदत बनाएं, गंदगी को कूड़े में डालें. धन्यवाद. And now we have Simran Kaul. She will be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Simran, are you there? Yes. Good morning, ma'am. Please put your video on. Others who will love and love. Women who women of indomitable will. Very warm and cheerful morning to one and all. Today, I, Simran Kaul, has got the golden opportunity to express my views on the given topics, Beti Bachao, Beti Padhao. Narendra Modi inaugurated a scheme first called Beti Bachao, Beti Padhao. It is to save the girl child and educate the girl child all over India. The program was started on 22nd of January 2015 at Panipat. This scheme was initiated first especially in Haryana because this state has a very low female sex ratio all over the country. It has been effectively applied in 100 districts
across the country. It is to improve the status of girls in the country. The aim of Beti Bachao, Beti Padhao scheme is to stop the drop in girl-child sex ratio. Therefore, it will encourage women's empowerment in order to improve women's status in the country. It is a tri-ministerial initiative of the following ministries: Women and Child Development, Health and Family Welfare, Human Resource Development. The scheme has three primary objectives: prevent female infanticide, develop new schemes, and work collaboratively to ensure that every girl child is secured and protected. Third, ensure every girl child gets an equality education. It is important to look for the benefit that Beti Bachao, Beti Padhao is India's most high-profile campaign. It is to empower the girl child in the country. Some major impacts are balancing sex ratio, bringing girl child rights into focus, achieving girl child access education. The Beti Bachao, Beti Padhao scheme is an initiative by the government of India to address the issues revolving around girl children in India. This initiative under the scheme have started giving fruit as the level of awareness among the people is increasing. Therefore, people now have a serious impact to work for girl child upliftment in society. The success of this scheme added tremendously to the economic growth of the country. This is due to the fact that India cannot afford to have a large part of its population remain neglected. In the end, I would like to say courage, sacrifice, determination, commitment, toughness, heart, talent, guts. That's what girls are made of. The heck with sugar and spice. Thank you. Participant is Ms. Mansi Bandral. She'll be speaking upon Beti Bachao, Beti Padhao. Mansi, put your video on. Yes. This shlok has a very deep meaning. It says that where women are honored, there the deities are pleased. God dwells where women are worshipped. Swami Vivekananda has rightly said, the upliftment of the woman and the awakening of the masses can be happen only if the awakening of masses comes first, and then only can any real good come about for the country and for my India. A very ecstatic morning to all the jury members and my dear fellow contestants. This is Mansi Bandral, a student from Government College of Education, Jammu. Today I will be speaking on the topic Beti Bachao, Beti Padhao. Indian culture has always treated woman as a goddess in its ideological sense, but the reality is far from this mythological concept. In reality, Indian society suffers from imbalanced gender development and a skewed sex ratio. The 2011 census data presented a grim picture of a declining trend in the child sex ratio between 0 to 6 years. It was an all-time low of 918. It was also realized that because of the unequal participation of women in the labor force market and the development sectors, India was unable to harness the true potential of the female gender. Earlier, the primary goal for girls of a nation was to get ready for marriage, and they had to learn an expertise in the household chores and nothing outside the four walls of their house. Keeping this in view, Beti Bachao, Beti Padhao Yojana was launched on 22nd January 2015 at Panipat, Haryana with an initial funding of ₹100 crore by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I also heartily thank our Prime Minister for increasing the age of marriage for girls up to 21 years of age, which is a brilliant idea as it will enable the girls to access the basic right of education up to at least the graduation level. A dip in the CSR and the SRB ratio was a significant indicator of gender discrimination, reflecting both pre-birth discrimination through gender-biased selective abortions and post-birth discrimination by neglecting health, education, and the nutritional needs of the girl child. In what scriptures do you find statements that women are not competent for knowledge and devotion? You will find that in the Vedic or the Upanishadic age, Maitri and Gargi and other ladies of revered memory have taken the places of Rishi through their skills. Since such idle women were entitled to spiritual knowledge, why shall the women not now have the same privilege? What has happened once can certainly happen again. History repeats itself.
I would also like to share that our Honorable Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha, has recently gave his nod for the constitution of a commission for women in the J&K UT and has announced 15% reservation for women in Jammu Kashmir Police. This indicates the empowerment of the women in true sense, and that too at the grassroots level. Recently, Rajouri District Administration of Jammu has set up 25 handicraft centers to make women self-sufficient. Apart from the steps being taken by the Government of India, states and the UTs, I would like to suggest a few measures for saving, educating and empowering the daughters of India, which is my vision of a new India. Self-defense classes must be given to the girls in every educational institution, and that too at a very early age. Another way forward can be the constitution of district-level task force headed by local female frontline workers with high integrity. Nukkad Nataks must be organized frequently to create awareness among the masses, encouraging them to save, educate, and empower the girls for a brighter tomorrow. Orientation programs for panches, sarpanches, corporators, and civil society members must be held on a regular basis along with rallies. People practicing domestic violence, sexual harassment, indulging in dowry must be strictly penalized so that they do not dare to harass that woman again. And the most important point, ladies and gentlemen, parents must inculcate good values among their boys and teach them not to indulge in any unethical or biased behavior towards girls and rather protect her in case of any trouble. This behavioral change is a long-term measure that would have a large impact on the society. Without the support of family, powerful women like Savitribai Phule, M. Fatima Bibi, Indira Gandhi, Sudha Murthy, Kiran Bedi and Smriti Irani would not have been able to showcase their capability on a global platform. I would wrap up by saying that there is no hope of rise for that family or that country where there is no estimation of women, where they live in sadness. If India intends to be a Vishwa Guru, it ill afford to leave half the section of society behind. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible, ladies and gentlemen, for a bird to fly on only one wing. Thank you everyone for a patient hearing. Jai Hind, Jai Bharat. Next speaker is Shal Bala. She'll be speaking upon Beti Bachao, Beti Padhao. Shal, are you there? Ma'am, am I audible? Yeah, you are audible, but little low. मेरा नाम शैल बाला है। आज मैं आपके समक्ष अमुख्य विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना चाहती हूँ। मैं अपने विषय की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कविता नन्ही बेटी को जीवन का वर दो करना। हत्या क्यों करते हैं की, चीख अनसुनी क्यों करते मासूम की, दोष उसका है पर प्रभु के उपहार को क्यों ठुकरा दिया है। You are not clearly audible, beta. लोग ने सब बुला दिया है। जगत जन Voice is breaking. नहीं, बेटी का लाड और पत्नी का कम गांव की सरपंच रही कामयाब missing most of the content is missing. We are missing most of the content. आवाज नहीं आ रही है. Kindly check your internet connection. Your voice is totally broken and we're not able to hear. आजमी को गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से की हालत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये गिरजाघर आदि बने मिलते हैं। संसार
जहाँ लड़कियों के साथ आई थिंक बहुत देयर बुरा इज बर्ताव। सम इंटरनेट इशू, आवाज नहीं आ रही है। I Not think getting. she's not able to hear us. That's Yeah, why she keeps on speaking. So let her finish. Am I not audible? No, Waste and you most are of not your audible. content. Not audible. Am I not audible? Your voice is breaking. Yeah, you're audible now, but in between your voice was breaking. Ma'am, shall I start again? Okay, start again. नमस्कार, मेरा नाम शैलबाला है। आज मैं आपके समक्ष अमुख्य विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने विषय की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कविता नन्ही बेटी को जीवन का वर दो से करना चाहती हूँ। हत्या क्यों करते हैं गर्भ में उसकी, चीख अनसुनी क्यों करते हैं मासूम की, दोष उसका है क्या, फर्क बेटे बेटी में हमने ही किया। हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों बेटी को दर्द हमने इतना दिया है, प्रभु के उपहार को क्यों ठुकरा दिया है, क्यों दो घरों की रोशनी को सिसका दिया है, बेशर्मी से बेटी का सौदा किया है, दहेज के हाथ पर उसे बेच दिया है। मालिक का खौफ और कानून का डर, धन के लोभ सब बुला दिया है। जननी है वो, प्रेम की शक्ति है वो, शीतल छाया है, परिवार की आत्मा है वो, ममता की प्यारी गोद याद नहीं, आंख अगर किसे याद नहीं, बेटी का लाड और पत्नी का स्नेह, माँ का आशीर्वाद किसे याद नहीं, शिक्षा का सौभाग्य तो, बराबर के अधिकार तो, जीवन में सम्मान आखिर बेटी है किससे कम। गांव की सरपंच रही, कामयाब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही, एस्ट्रोनॉट डॉक्टर प्रोफेसर उद्योगपति पायलट इंजीनियर बनी। विज्ञान में भक्ति में साहित्य और कला में शोहरत है हासिल उसे हर क्षेत्र में। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, कृष्णा पाटिल माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, कल्पना चावला ने भारत को गौरवान्वित किया, HSBC ने नीना कदवाई को भारत प्रमुख घोषित किया, शबना आजमी को गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय लेखिका अदिति रॉय ने बुकर पुरस्कार। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आप किसी भी देश की हालत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो वहां की औरतों की हालत देखकर लगा सकते हैं। एक तरफ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है, यहाँ हमें जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजाघर आदि बने मिलते हैं। हमने आजादी अहिंसा से पाई और सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। दूसरी तरफ हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारे देश में औरतों का पैदा होना इतना नापसंद है कि लाखों लड़कियों को जन्म से पहले ही गर्भ में या जन्म लेते ही जान से मार दिया जाता है। जो लड़कियां किसी वजह से बच जाती हैं, उनका बचपन दुखों और जुल्मों में बीत जाता है। औरतों की जिंदगी को सुधारना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं औरतों की पढ़ाई, सेहत, खान पान और सुरक्षा को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। इसकी शुरुआत हरियाणा से होने के पीछे ये कारण था कि वहां पर लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों की तुलना में काफी कम था। आंकड़े जितनी जानकारी प्रकट करते हैं उसे 1000 शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। आंकड़ों के अनुसार बच्चों का लिंग अनुपात पिछले 40 साल से तेजी से बिगड़ रहा है। अनपढ़ परिवारों के मुकाबले पढ़े लिखे परिवार ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले भारत में लड़कियों का लिंग अनुपात बहुत कम है। 2006 की प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपे एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ कन्या भ्रूण हत्या हुई है। भारत बहुत समय से पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन अब समानता से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें आदमी और औरत का दर्जा बराबर का हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आओ लिंग जांच को ना कहें, विधवा औरतों को सहयोग दें, अपने बेटों को जागृत करें। आओ हम अपनी बेटियों को सबसे बड़ा तोहफा दें, सम्मान। धन्यवाद। Next speaker is Shakhu Sharma. Shakhu, are you there? I think she's not in the meeting. I'm not able to trace her in the participant ma'am. list. मैम पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था लेकिन अब हो गया। So put your video on. Can I start? First, put your video on.
How would we come to know whether you are speaking or somebody else at your end is speaking and you have put your video off? So you need to put your video on, beta. Can I start? Visible, at least to me. If any of the panelists can see Shaku, she's not visible to me. No, I'm sorry. We can't see him. Put your video on. There is a virtual restriction, beta. How could we come to know whether you are speaking or somebody else at your end? So you need to put your video on. मैम मैंने वीडियो ऑन की किया है आवाज बट नहीं आ रही है अभी। मैम वीडियो ऑन है किया मैंने मैम, लेकिन यहाँ पे मतलब शो नहीं हो रहा है। Not visible to us. I would like to ask the esteemed jury members whether we should allow her or we should ask her to continue later on. Hello, Gurpreet, we can ask her to join later because one of the parameters we are to judge on is the demeanor. For judging the demeanor part, we need to see her also. Yeah, you are visible now. You are visible now. Go ahead. Ma'am, can I start? Yeah, please. सुप्रभात। आज मैं शाकू शर्मा जीजीएम साइंस कॉलेज से आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कुछ विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटियां हैं जीवन का उपकार, मत छीनो इनसे पढ़ाई का उपकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 21 जनवरी 2015 में शुरू किया था। यह सोचा है कि यह मंजिल कि जब आप काम से थक घर आए हो और घर पे मुस्कुराए स्वागत करने के लिए ना माँ हो, ना बहू हो, ना बेटी हो। आपके स्कूल में क्या है आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल में, बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, शहर भर सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो? तो क्या यह प्रकृति के साथ अन्याय होगा? आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि कुछ घर में आज भी लोग बेटियां नहीं चाहते। कुछ लोग की आज भी यह सोच है कि बेटी सिर्फ बोझ होती है और घर में बेटी नहीं चाहते। लड़कियां नहीं जन्मेंगी तो चांद पर पहुंचने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम, गायकी में लता मंगेशकर और नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी, चांद पर पहुंचने वाली सुनीता विलियम, कल्पना चावला के जैसे साहित्य की दुनिया में महादेवी वर्मा, गायकों की दुनिया में लता मंगेशकर, देश की आजादी में सरोजनी नायडू के जैसे आज भारत आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ उसमें पुरुष का ही नहीं बल्कि बेटियों का भी बलिदान है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को चलना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। Your video was not on for most of the time. We were not able to see you. Anyhow, next participant is Mr. Aghav Arora. He will be speaking on Skill India. Aghav, are you there? I think I can see you. I am audible to all? Yeah, you are audible. Please go ahead. मैं आघव अरोड़ा जीजीएम साइंस कॉलेज का छात्र इंडिया कुछ कहना चाहता हूं। कुशल होगा वही कुशल हो जिस Am I audible? Hi, you are audible.
नमस्कार, मैं आघव अरोड़ा, जीजीएम साइंस कॉलेज का छात्र आज आपके समक्ष स्केल इंडिया के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहता हूं। जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो मानव अपनी कुशलताओं में वृद्धि करता जाता है वह हर प्रकार से सुखी होता जाता है, और जो मानव आलस्य और दृढ़ता के कारण कुशलता का विकास नहीं करता वह कस जाता है और तिरस्कृत होता है। कुशल भारत योजना का मुख्य लक्ष्य देश के गरीब व वंचित युवा हैं जिनके पास हुनर तो है पर उसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है और ना ही उसके लिए कोई मान्यता है उनके पास। युवाओं के इस हुनर को प्रशिक्षण द्वारा निखार कर बाजार योग्य बनाकर प्रमाण पत्र देते हुए उनके लिए रोजगार का सृजन करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घोषणा के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि कौशल भारत कुशल भारत योजना का लक्ष्य युवाओं में कौशल के विकास के साथ साथ उनके मूल्य का समाधान भी करना। देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कुशल भारत कौशल भारत को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान कराना है जो कई वर्षों से अविकसित क्षेत्रों की पहचान करके विकसित करना। इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता, इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता, समंदर में हर कोई मोती बीन नहीं सकता। कौशल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। सरकार ने जिला स्तर पर शिक्षितों और अशिक्षितों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए खोलने का प्रयास किया। हमारी युवा पीढ़ी तकनीकी समावेशी हो इसका प्रयास करना चाहिए। छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने विवेक का इस्तेमाल अपने हुनर को निखारने में कर सके। इस मिशन के कुछ मुख्य लाभ हैं जैसे कि कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत में बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, उत्पादकता में वृद्धि, भारत से गरीबी खत्म करने में सहायक, भारतीयों में छिपी हुई योग्यता को बढ़ावा देना और भारतीयों के जीवन स्तर का सुधार करना। अतः कौशल भारत एक महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर अमल करने से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की तरक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि मैं भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा लेने के लिए आह्वान करता हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आओ सब मिलकर करें ये प्रण, आओ सब मिलकर करें ये प्रण, कुशल हो देश का युवा और जन जन। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। Thank you very much, Agar. Next participant is Ms. Farzana Kausar. She'll be speaking upon Beti Bachao, Beti Padhao. Farzana, are you there? Yes. Am I audible? Yeah, you are very much audible. Okay. Shall I start? Yes, please go ahead. कि तोड़ना है पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही लेकिन भीतर कहीं तूफान अभी बाकी हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय बहनों तथा भाइयों, मैं फरजाना कौसर आज आपके सामने जिस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने के लिए तो ये सिर्फ 4 शब्द हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु इन शब्दों ने लड़कियों की संख्या बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 945 थी, लेकिन 2001 में घटकर 1000 लड़कों पर 927 हो गई। और इतना ही नहीं, 2011 में उससे भी घटकर 1000 लड़कों पर 918 हो गई। और लड़कियों की संख्या में भारी कमी के मुख्य कारण क्या थे? भारी कमी के मुख्य कारण थे जन्म से ही पूर्व भेदभाव। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था।
आप सबको पता है कि यूपी में पिछले 6-7 सालों में 7 लाख से ज्यादा लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया। क्या ये मानव संसाधन के साथ खिलवाड़ नहीं है? और आप सबको पता है कि मुंबई में 2013-14 में 30,117 गर्भपात हुए, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। और लड़कियों को पढ़ाना ना, उनमें उनको छोटे ही आयु में उनकी शादी करवा देना। फिर यूं ही नहीं मेरी जुबान से ये शब्द निकलते कि क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, यही सवाल करती हूं मैं। लड़की हो, लाचार, मजबूर, बेचारी हो, यही जवाब पाती हूं मैं। बड़ी हुई तो अपने ही सवाल का जवाब तब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, मजबूर नहीं, एक गरजती चिंगारी हूं मैं। छेड़ो मत, जल जाओगे, क्योंकि दुर्गा और काली हूं मैं। लड़कियों की घटती संख्या को देखते हुए 22 जनवरी 2015 को मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान लड़कियों को पढ़ाने और उनको हर एक अत्याचार से बचाने के लिए शुरू किया गया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पहले से अब कहीं ज्यादा जो लड़कियां जो हैं वो विकसित हुई हैं और शिक्षित हो रही हैं लड़कियां हमारे देश में। पहले जहां 1951 में 1000 लड़कों पर 945 लड़कियां थी, वहां आज 1000 लड़कों पर 1012 लड़कियां हैं। तो ये सब भारतीय सरकार के द्वारा हुआ है। वैसे तो लड़कियां बहुत से क्षेत्रों में आगे हैं, जैसे कि खेल कूद में, और इंदिरा गांधी जैसे हमारे पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। कल्पना चावला, हेमा दास, सुचेता कृपालनी, समृति मधाना और सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, स्टेफी डिसूजा, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो एक घर शिक्षित होगा, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो उसकी माँ होती है, और एक माँ जो है वो महिला है। तो एक लड़की पढ़ेगी, उसका घर शिक्षित होगा, एक घर शिक्षित होगा तो एक जिला शिक्षित होगा, अगर एक जिला शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। इसलिए लड़कियों की जो पढ़ाई है वो बहुत जरूरी है। तो ये अभियान जो है ये सिर्फ सरकार के होने से नहीं शुरू होगा, ये हमें अपने घर से सबसे पहले शुरू करना है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है और उन्हें हर एक चीज की सुविधा देनी है। इसलिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी है इसकी। बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों के लिए हर सुविधा रखें, क्योंकि अगर एक लड़का और एक लड़की एक घर में इकट्ठे पल रहे हैं तो एक लड़की को वो शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही जो एक लड़के को दी जा रही है? क्या वो दोनों समान नहीं है? क्या लड़की लड़के से कमतर है? ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए जो लड़के को देनी चाहिए, क्योंकि दिमाग तो दोनों में एक ही जितना है। तो इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, यही कहना चाहूंगी मैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Farzana. Now we have Mr. Umar Ayub Qazi. He'll be speaking upon Beti Bachao, Beti Padhao. Am I audible? Yeah, you are audible but not visible. Wait. Ma'am. Sorry, we are not able to see you. Ma'am, wait a minute. Internet connection is poor. It is showing at my screen. Ma'am, am I visible? Yeah, you are visible now. Please go ahead. मैं आज जिस मौजू पर तकरीर करने जा रहा हूं उसका अनवान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ का है। में खवातीन की का मसला बताया जाता है। सामने कराम, आप सब जानते हैं इस मुआशरे में औरत का तालीम याफ्ता है और जज्ब बनकर सामने आ रहा है। आज इस मुल्क को कायम हुए लगभग 3 तिहाई सदी गुजर चुकी है।
पर दर अफसोस इस शोबे में भी हमारी औरत, हमारी बहनों को खतरा है। एक औरत का मुआशरे में बनाने में अहम किरदार है। सनफ नाजुक की गोद माँ के रूप में बच्चे की अव्वल दरजगाह है। अगर माँ तालीम याफ्ता हो तो उसकी नस्लें आगे भी तालीम याफ्ता होती हैं। इससे हमें यह मालूम होता है कि औरत का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। अगर हम औरत को तालीम से महरूम रखेंगे तो इसका मतलब है हम अपनी नस्लों का शऊर, तालीम, इल्म हासिल करने के लिए मुश्किलात से घेर रहे हैं, जिसका मतलब है इंसान इससे आरास्ता व मुकम्मल नजर आता है। इसी के साथ एक ऐसा वक्त भी जब मुल्क मुस्तकबिल की ओर जा रहा है, सुपर पावर की तरफ जा रहा है, पर दर अफसोस इस वक्त मुझे हो रहा है जहां हमारे देश में औरतों को, छोटी बच्चियों को पेट में ही मारा जा रहा है। अगर देखा जाए उन्हें प्राइमरी क्लास में तक जाने की इजाजत नहीं। अगर देखा जाए तो ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है, क्योंकि जब वो किसी की बीवी, माँ या दादी होंगी तो वो अपनी नस्ल को ये जज्बन सिखाएंगी। फ्रांसीसी सियासतदान के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि कौम की तरक्की दरियाफ्त हो रहा तालीम याफ्ता माओं के बाद नामुमकिन है। ऐसे इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत का साथ हर जगह हुआ। इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी ने भी इसका आगाज शुरू कर दिया 2015 में, और मुल्क के लिए इंतहाई मददगार साबित हो रहा है। पर खवातीन से पहले हमें ये तर्तबर साबित कर दिया है कि वो हर मैदान में किस मर्द से कम नहीं है। सनफी तासुब इन्हें महफूज माहौल फराहम करना वक्त की ताज़त है। अगर देखा जाए तो इन मसाइल पर काबू पाने के लिए मुल्क के वजीर आजम को पहल करनी होगी, और की भी गई है। इसी के साथ वो अपनी माओं के पेट में बच्चों को, आजकल अगर हम देखा जाए तो हमारी माएं बच्चियों का पता करा के अल्ट्रासाउंड से जो कि बच्चियों को मारा जाता है। दर अफसोस की बात है, हमें इस चीज को रोकना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े और आगे हमारे देश को भी संभाले। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए मुल्क के वजीर आजम के साथ साथ हम जैसे ग्राउंड लेवल पे भी करना चाहिए, ताकि हम लोग जब सुधरेंगे तो हमारा देश भी सुधर पाएगा। अगर देखा जाए इल्म की ताज़ियत से हमें अपने बेटियों बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, हर शे में आगे जा रही। अगर देखा जाए हमारे कुछ ही महीने पहले ओलंपिक्स के गेम्स हुई, जिसमें हमारे देश में हमारी बच्चियों ने नाम रोशन किया, जहां कि हमारे देश ने में पहले किसी बच्चे ने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं लाया था, पर हमारी बच्ची ने पहला गोल्ड मेडल लाया। इसी के साथ हमारे देश में औरतों का होना सबसे बड़ी बात है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ताज़ियत फरमाए, थोड़ा सुने, कि औरत खुद एक बड़ी ताकत है। औरत खुद एक बड़ी ताकत है जो एक मर्द को पैदा करती है, जो एक मर्द को पैदा करती है। अगर देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा इतना है कि अगर मैं इस जो भी आज कंपटीशन जा रहा है इसमें जीतूं ना जीतूं वो अलग बात, पर मेरी तरफ से इतना चला जाए कि जितने बंदे देख रहे हैं वो अपने घरों में अपनी माँ, बेटी, बहनों को समझा पाए, अपने घर वालों को बताएं कि हमें बेटियों की क्या अहमियत है। हर मजहब कहता है, हर इस्लाम देखा जाए, हर चीज देखा जाए, हर मजहब में यह कहा गया बेटियों की इज्जत की जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए। ऐसा कोई मजहब नहीं कहता है कि बेटियों को ना पढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए एक शेर और कहना चाहता हूं। मेरे आंचल पे बिखरते हैं हजारों रंग चाहत के, मेरे आंचल पे बिखरते हैं हजारों रंग चाहत के, कभी ममता, कभी बहना, कभी बेटी की सूरत में। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे अलविदा होना चाहता हूं। आदाब सलाम, शुक्रिया। Very much, Umar. The next participant is Jasleen Kaur. She'll be speaking upon Incredible India. Jasleen, can you hear me? Please put your video on. Visible, ma'am? Yeah, you are visible. Yes, go ahead. भाषा बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान, सारा एक है हिंदुस्तान। A very warm good morning to all of you. I am Jasleen Kaur from Government Maulana Azad Memorial PG College, Jammu. Sorry to interrupt you, Jasleen. You are not supposed to name your college. You just name yourself and start with your topic. Okay, ma'am. Can I start again, ma'am? Yeah, please. भाषा बोली अलग अलग है,
फिर भी सबका है सम्मान, पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान. A very warm good morning to all of you. I am Jasleen Kaur. Today I will be speaking on the topic of Incredible India. Incredible India is the name of an international marketing campaign initiated by Government of India to promote tourism to a global extent. It projected India as an attractive tourist destination by showing its different aspects. Let me discuss some aspects. Number one, historical aspect of Incredible India. India's civilization is more than 5,000 years old. India was the richest country until the invasion of Britishers. India is the birthplace of many great personalities like Chhatrapati Shivaji, Maharana Pratap, Rani of Jhansi, Samrat Ashok, and so on. Yoga, which was originated in India, is now practicing all over the world to get physical benefits as well as mental peace. Now talking about geographical aspect, I can say India is one of the 17 mega diverse nations of the world. It contributes 8% of the global biodiversity, although it bears only 2.4% of the land area of the world. Every type of climate prevails in India, from the hot desert of Rajasthan, cold desert of Ladakh to humid tropical Western Ghats. India figures with 4 out of 36 biodiversity hotspots in the world. The Himalayas is the world's largest mountain range in the world, in the India, which attract the beauty of India, which is one of the another aspect. Moving ahead on the another aspect, amazing tourism destination of India. There are historical monuments that attract the attention of people from all over the world. I would also like to add the heritage tourism we have, like Haridwar, Golden Temple, Jagannath Temple, Ajmer Sharif Dargah, and the beautiful churches of Goa. On economic point of view, these heritage places generate revenue for our nation and help us to build a stronger economy. India is the second largest wheat producing country in the world. We have the world's largest road network. This helps us to promote our remote areas as well. Now looking at another aspect, that is social aspect. India's unity in diversity is known to all. Our country is a mixture of cultures, religions, traditions, diversity in food, language, and so on. Every state has its own attraction. But despite these attractions, it is evident that our country is lived with true harmony and cooperation with each other and the feeling of oneness among themselves. When moving on another aspect, I will say that India is the 7th largest country in the world with 1.38 billion people. And I proudly say that India has the world's largest economy, world's largest democracy, which is enough in itself as a political aspect. India's incredibility is known to all. Now it's our duty to understand our responsibility towards our nation, our people. Let's join our hand and do what India was born to do, to build love, to build peace, and to build respect. I end my say with a quote, जहां अतिथि को कहते हैं भगवान, जहां हर धर्म का होता है Next participant is Mr. Nipun Memolia. He'll be speaking upon Digital India. Nipun, can you hear me? Yes, ma'am. I'm audible. You are audible and visible as well. Thank you so much, ma'am. So shall I start? Shall I start, ma'am? Yes, Nipun, yes, go ahead. Okay, thank you. Every day there is something new to you and to me. But here on this stage, we see a perfect image of India or digital India. Good afternoon to all respected jury member, chief guest, and other dignitaries, and also my dear friends. Today, I, Nipun Memolia, going to speak on topic Digital India.
Today, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. are the new neighborhood of our new world. The status that now matter is not whether you are awake or asleep, but whether you are online or offline. Pace at which people are taking to digital technology define our stereotypes of age, education, language, and income. In digital age, we have an opportunity to transform lives of people. I see technology as a means to empower and as a tool that bridge the distance between hope and opportunity, ruler and the government opportunities. Social media is reducing the social barriers. Digital India is an enterprise for India's transformation. It's helping me, you, and everyone to stay in close touch with people. We must ensure that technology is accessible, affordable, and add value into lives of people. So if we say that the digital world is shaping the world into a better workplace, there is no lie. I just share a gist of New India or the Digital India. Let's see what Digital India is. Why this word Digital India came up. The government of India launched the Digital India campaign under the motto Power to Empower. The Digital India campaign was launched by Prime Minister Narendra Modi on 1st July 2015. The campaign aimed to improve the country's technological advancement. It aims to provide high-speed internet and will ensure that every citizen of the country has an electric device like a mobile phone or a smartphone. One of the major motives of the campaign was to make government service accessible every part of the country. The primary goal of the event or the campaign is to increase the technological access of the people. The government consequently increased the area of internet connectivity and made sure that it is accessible from remote parts of the country. One of the initiatives of the campaign was to plan and connect the rural area of the country with high-speed internet. The campaign boosted the use of electronic service and devices throughout the country. The Digital India campaign project is run by Bharat Broadband Network Limited, BSNL. Let's hear out from this data. Only 17% of the rural India has access to the internet, according to a 2017 survey report of Internet and Mobile Associations of India. This is a staggering contrast to the 60% of the urban Indian who have internet access. More surprisingly, people, perhaps women, only make up for the 29% of India internet user. Studies have shown that the digital divide is not just between the rural and the urban India, but also between the men and women. This divide prohibits marginalized community from experiencing the benefit of digital speech and weaknesses. Their ability to contribute to India's democracy, yet government initiative which have sought to solve this problem have been ineffective and are in dire need of upheaval. Keeping these facts and figure in mind, these objectives of Digital India's were proposed. A stable and secure digital infrastructure to connect every part of the country. Everyone should easily access online government services, digital literacy, and digital literacy of the people. The government wants the people of the rural area to make use of internet so that they can access to the various online services. Under digital infrastructure initiative, almost all services are made available online, like managing bank account, money transfer like RuPay, debit card, credit card, Visa, etc., communication like WhatsApp, Facebook, Twitter, and other means, online learning educations, and signing up for the government portals, and also sorting document digitally as compared to the piles of files.
This initiative is also working to provide 4G, 5G, and broadband internet services in rural area of the country. This will make people get high benefit from hundreds of government opportunity, and hence this will create abundance of new opportunities to find the employment for the field. Now, let me tell you that what do I think or other think that Digital India is a success or failure. Digital India initiative is a work progress. Only the literate are able to get benefit from it. Through that has made a massive impact on the common people of India. Much projects are either inadequate or unsatisfactory to some extent. However, the number of internet users has increased in India. The country is also able to notice newly added users each month. The Digital India initiative has laid a framework for the technological advancement in country. The only problem is the lack of awareness and literacy among the peoples. Digital India initiative wants to cover the entire nation under it. However, some part of their country is still unable to get connected with the latest technology due to lack of communication, resources, and understanding of people. So as I started that this stage is a perfect picture of India. So what do you think that Digital India is really changing or not? But for me, it's a success. Likewise, a human. If internet is used by a good human for the good purposes, it will lead to various advancement and reality aspects to such good things, but that technology doesn't have such a human brain to identify that person is a good or bad for us. So let's join our hand and literate ourselves to the digital world. Thank you for listening me patiently. Very much, Nipun. I would request all the participants to please stick to the time limit. Next, we have Ms. Sakshi Bhatt. She'll be speaking upon Incredible India. Sakshi? Ma'am, am I audible? Yeah, you are audible. Please put your video on. Ma'am, is my video... You're visible now. Please start. I'm just wait for a while. Let me fix this. Okay. Okay. Namaskar. A wish, a greeting, a gesture, of course. Besides, I present and represent here a hallmark of civilization, a culture old as eternity itself, with my folded hands simply obliterating or wishing to obliterate the limitations and dualities within the self of mine, and if fortunate enough, all of you. I'm Sakshi Bhatt, and I'll be speaking on the topic Incredible India. Firstly, I will start with 1, then 2, 3, 4, till 9. Then, of course, 10. Oh, even if I had thousands of ideas, I would have to be content with only 9 had no 0 been there. Well, all here will agree mathematics is the mother of all sciences, but her soul is 0. And do I have to restate the details of accomplishments by Bharat in field of science and mathematics? But I don't think 4 minutes time will allow me that. The quest to know more and more has been the ethos of this culture. And that's why I can proudly say that we have always been the land of seekers. Whole of this world buzzes with the simple knowledge that India is the largest democracy in the world, which I don't think testifies any less to the fact of unity in diversity being most prevalent here, with different cultures thriving to their fullest. But I won't glorify any particular culture over some other one, because here we always strived for inner well-being and liberation from human limitations. And accordingly, every culture of this nation was structured. And what to say about the beauty of that diversity, which is truly like a colorful kaleidoscope. As I just talked about inner well-being, how can we not talk about temples, which unlike popular belief are only places of worship?
They were so meticulously designed that something inside human being will be touched to a great sense. Places like Amarnath, Kedarnath, Vaishno Devi, and many more are such examples. At the same time, also places like Taj Mahal, one of the wonders of this world, is an epitome of aesthetics, designed by human hand and making them attractive tourist destinations. Keeping in mind the physical and mental well-being, this land is very much focused on spiritual well-being as well, for which sciences like yoga evolved here only. And in 2015, even United States considered that yoga is a gift that India has presented to the world. Man is a mortal being, therefore has no time to waste on greed or hatred. And this was deeply understood by the culture called Bharat, and thus evolved the phenomenal spiritual culture from this place. I'm not a deadpan philosopher, neither do I believe in some heavenly stuff up there. But when a human being closes his eyes, there is a tremendously complex and untamable power that makes the heart beat, brain function, gut to dissolve the food, and a billion cells perform like a galaxy of stars. So, oh heirs of Bharat, let us bask into the glory known as Bharat. Bharat Mata ki Jai. Sakshi, the next one is Miss Sunidhi Sharma. She'll be speaking on Digital India. Sunidhi. Ma'am, am I audible? Yeah, you are audible but not visible. Just wait for a while. I'm just doing my settings. It's not. Yeah, please. So now it is visible. Yeah, you are visible. Yes, beta. Go ahead. Video lost again. Sunidhi. Yes, ma'am. Video has lost. Yeah, not visible. Oh, sorry for the interruption, ma'am. Just wait for a while. And now it is visible. Excuse me, ma'am. Yes, you are visible. Yes. Okay, ma'am. India has seen a dream of digital India. From the latest science to the latest technology, everything should be available at one step. This is the dream of our respected Prime Minister Narendra Modi to connect entire India over a single network and to transform India into a digital empowered society and knowledge economy. A very pleasant good afternoon to the honorable dignitaries. I am Sunidhi Sharma. In my opinion, Digital India proved to be more beneficial. To let me speak in favor of this. Before actually starting the discussion on Digital India, let me explain the main objective of Digital India. Digital India is a massive campaign launched by Prime Minister Narendra Modi on 1st July 2015. The main aim of the campaign was to make the government services accessible in various parts of the country and to provide high-speed internet to the rural areas. The government worked on improving access to technology to the remote and rural people of the country. The rural part of India, with the majority of the population, suddenly found themselves interconnected, directly benefiting millions of lives. Farmers can now directly communicate easily with the experts on the range of farming services and get better production. In my debate on Digital India, I would like to highlight that Digital India has launched a number of government services. And some of them are, they have launched a new website named mygov.in, where people can share their ideas on the administration's policy and the overall governance. This is introduced so that citizens can come forward and actively participate in the process. Digital attendance was introduced to keep the attendance of the government employees. This initiative was launched in Delhi and made use of the biometric system to mark the attendance. An application named Umang, abbreviated as Unified Mobile Application for New Age Governance, deployed for all mobile platforms.
which allows the people to access government services such as tax payment, railway ticket booking, education portal, digital locker, and a biometric identification system called Aadhaar. It is available in multiple languages. The objective behind it was to connect the rural parts of the country with the high speed internet. Through my debate on Digital India, I realized that since all the government transactions will be done digitally, many people came under the tax radar, and as a result, a significant portion of the black money in the market was traceable. This leads to a sudden increase in the revenue collected by the government and enormous decrease in the amount of black money people had. In this talk, you will find that how helpful this is for the people living in rural areas. People from all over the India can now directly access to a larger number of government agencies for the comfort of their homes. They don't have to travel for hours to visit to the government offices. So here I conclude my debate on Digital India. I hope it will help you to understand that how important it is for the growth of our country. Digital India is a progressive India. Thank you so much. Thank you, Sunidhi. The next participant is Duha Faisal. She'll be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Duha, beta, can you hear me? Duha Faisal, I can see you in the meeting, but your mic is mute. I think you're not able to hear us. Jury members, shall we wait? Oh, she's joining. She's joining with other device. Duha, can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible? You are audible, but please put your video on. Am I visible now? Yeah, you are visible. चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोब डाला जा रहा है. हम ही बुनियाद है घर की और हमें ही घर से निकाला जा रहा है. A very good afternoon to all of you. Today I, Duha Faisal, would be presenting my views on the topic Beti Duha, Bachao. sorry to interrupt you. Please, please put your camera in front. You're not visible. Your face is not visible. Yeah, we want to see you. Yeah. Is it clear now? Yeah, okay. Okay. Should I start again? Yes, beta. Okay. चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोब डाला जा रहा है. हम ही बुनियाद है घर की और हमें ही घर से निकाला जा रहा है. A very good afternoon to all of you. I, Duha Faisal, would be presenting my views on the topic Beti Bachao, Beti Padhao. Beti Bachao, Beti Padhao is a nationwide campaign to impose the efficiency welfare services meant for the women. The campaign was launched on 22 Jan 2015 by PM Narendra Modi as a part of Nari Shakti. The campaign is called Beti Bachao, Beti Padhao, which means save daughter, teach daughters. But today, I am not going to go into the brief details of Beti Bachao and Beti Padhao. Today, I am going to put forth a question to each one of you that why was there even a need to introduce Beti Bachao, Beti Padhao into the society? Why are women not safer in the country, in the society, even in their homes, that we needed a scheme to save them up? Why are women being deprived of the basic human right, that is right to education, that we needed a scheme to teach them up? We have evidences from the past that women have always been the victims of cruel human brutality. Whether we talk about the sati system that happened ages before, or the Nirbhaya and the Asifa case that is still happening in the 21st century. From a long time, women have been left behind the ghost story of India. They usually don't have a voice or say in various matters. And in many cases, they don't have right of refusing to get married at a young age. India is a developing country, and with development comes responsibility to ensure that every citizen take part into it. We can only expect change when we change the mindsets of the people.
Just altering the laws and making the policies gender sensitive won't bring the change we wish to see in our country. Female in some parts of the country are still excluded and not given the opportunities and rights that they deserve to have. Beti Bachao, Beti Padhao is one such scheme to change the mindset, but unfortunately, it hasn't reached all over the India. There is an alluring desire in India to have a male child. People take depths of money to educate, to provide quality education to their male child, but the same depths of money are taken to get their female child married. Many programs have been launched that have made women more confident and talk about their experiences and feelings. In 2018, with the global context of Me Too and Times of Movement, actress like Tanushri Datta spoke about her sexual harassment in the Bollywood industry. With the ever-growing movement in India, more and more women are speaking about their experience of sexual harassment and gender-based violence. It is an important step towards a world where all gender are viewed as equal. But this doesn't mean that gender inequality does not exist. Women in India have been regarded with utmost respect and accorded prestige. For a nation to progress, it is essential to empower women. I am glad that India has blessed us with women pioneers that have broken the shackles of gender stereotypes in every field. With proud, I would like to quote PM Narendra Modi: "Daughters should not be a burden, but a blessing." We realize the power of a woman when we see a woman pilot flying the plane all by herself. We realize it when she brings gold medals or any other medals in the Olympics. In many senses, knowledge is power. So with the program aiding in giving women and young girls access equal education, it helps in ease critical issues such as poverty and employment. By ensuring women have access to resources, we can help women empower themselves, become more financially independent, and achieve their goals. I am the identity of myself. This is Duha. Before being somebody's daughter, before being somebody's wife, I should be the representation of myself. And this should be the case of every woman out there. She should be the representation of herself. Then we could say we are moving towards a new India, the better India. At last, I would like to say a few lines that a woman needs to say to this world. शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जीवन मेरा, तुम पर कोई बोझ न बनती, कर चुका कर जाती मैं तेरा। आई इस जगह में बिन सोचे क्या हशर मेरा, सुना था इंसान है बसते पर टूट गया बरम मेरा। क्या खुशियां मिल जाएंगी क्या खत्म करके जीवन मेरा, भूल नहीं ये बात मेरी, तू औरत से है जीवन तेरा। जब चीखी चिल्लाई थी मैं तब आवाज कहाँ सुनाई दी थी, मेरी हत्या की आखिर किस इंसान ने गवाही दी थी। पूछूं ये सवाल किससे, गलती किस सजा की सुनाई दी थी, बेटी होना पाप अगर है तो बेटी क्यों बनाई थी। Thank you so much for your patient listening. Hriday Narayan Mishra. I cannot see him on the screen. I don't know whether he is there or not. Hriday, can you hear me? Hriday Narayan Mishra. Yes. Yes, Hriday. He'll be speaking on Incredible India. Please go ahead. आवाज आ रही है मैम? Yes, बिल्कुल आवाज आ रही है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार, मैं हृदय नारायण मिश्र अतुल्य भारत पर अपनी बात को रखता हूँ। मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ इस ऑनलाइन मंच को जिसने हमें अपने देश पर दो शब्द कहने का मौका दिया। आज इस स्वर्णिम अवसर पर मैं अपने देश के प्रति अपने हृदय की अंतर्मन से कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का,
यह देश महापुरुषों का, यह देश गुणी महाविद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का। भारत के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये तो वो देश है जिसकी मिट्टी माँ की आंचल की तरह पवित्र और ममतामयी है, जिसके आंचल पर कोई दाग न लगे और इसे रंग बिरंगा रखने के लिए उसके बेटे सरहदों पर अपने जान की बाजी लगा देते हैं। हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी खूबसूरती की कहीं कोई मिसाल नहीं है। इसलिए यहाँ आने वाले सैलानी भारत को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं। भारत में अनगिनत ऐसी जगह है जहां पर प्रकृति ने अपने बेहतरीन छटा को खूब बिखेरा है। फिर चाहे वो ऊंची चोटियों पर मौजूद चर्च हो, या फिर घाटी में बनी चाय के बागान, या फिर खूबसूरत हरी भरी वादियां, सभी को देखकर दिल एक बार गदगद हो ही जाता है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतुओं का आनंद हम लेते हैं: शीत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा, शिशिर एवं ऋतुराज बसंत। हमारे भारत के अतुलनीयता पर जितना बोलने कम है। यह वही राष्ट्र है जिसकी मिट्टी में भरत विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए। यह वही देश है जो सोना, चांदी और कोहिनूर जैसा अद्वितीय हीरा दिया तथा न जाने कितने औषधि दिए। भारत की इन्हीं धरोहरों को देखकर अतुल्य भारत कहा जाता है। भारत विश्व के शीर्ष पर्यटक स्थलों से एक है। इसीलिए भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2000 में एक अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग, आयुर्वेद, धर्म, संस्कृत और संस्कृति पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना था। और देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए इस अभियान से संभावनाओं के नए द्वार खुले। देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला अपने किस्म का यह पहला प्रयास था। पर्यटन के क्षेत्र में विकास इसके पहले राज्यों के अधीन हुआ करता था। राज्यों में समन्वय के स्तर पर भी बहुत थोड़े प्रयास दिखते थे। देश के द्वार विदेशी सैलानियों के लिए खोलने का काम यदि सही और सटीक विपणन ने किया तो हवाई पर्यटन स्थलों के सीधे जुड़ाव ने पर्यटन के क्षेत्र में विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सैलानी पर्यटन के लिहाज से सुदूर स्थलों की सैर और आसानी से कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों की विमान कंपनियों की देश में उड़ान भरने की इजाजत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी सुदृढ़ हुई है। भारत में केवल गोवा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ही पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को भी अच्छा लाभ पहुंचा है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में कराए गए एक राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण के तहत कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तवांग मठ, जैसलमेर, दुर्ग और नालंदा विश्वविद्यालय को भारत के 7 आश्चर्यजनक स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया था। पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत अभियान के तहत इन आश्चर्यजनक स्थलों की घोषणा की गई थी, जिसमें ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, स्वर्ण मंदिर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, तवांग मठ, जैसलमेर का किला शामिल है। भारत एक प्रकार से फूलों की माला है, जिसमें रंग बिरंगे फूल भारतीयता के धागों से पिरोए गए हैं, जिसका सबूत हमारी विविधता में एकता की संस्कृति देती है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अलग, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, राह अनेक, मंजिल एक। और ऐसी एकता का मंत्र किसी और देश में नहीं मिल सकता। यह भारत की धरोहर है, यह भारत की अतुलनीयता है, यह भारत की अतुल्य संस्कृति है। जय तु भारतम, जय तु भारतम, नमो नमः, धन्यवाद। धन्यवाद हरिदेव। अब मैं बुलाना चाहूंगी मानसी अदलाहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बोलेंगी आप। मानसी। मानसी। मेरा
Yes, I can see you in the meeting. मानसी, can you hear me? आवाज आ रही है मैम? बेटा आवाज बहुत कम आ रही है ना, वॉल्यूम थोड़ा माइक का बढ़ाएं और वीडियो ऑन करें। अब आ रही है मैम आवाज? हाँ बेटा आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? जी मैम, मैं ना शुरू करूं? वीडियो ऑन करें। मैम वीडियो तो ऑन है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इफ एनी वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर कैन टेल अस। या अब दिख रहा है, अब जी दिख रहा है मैम। मानसी, करें जी स्टार्ट। मैम। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अराफ्णः अपघ्नन्तो अराफ्णः। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संचालिका महोदय और सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में नारियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी नारी के बिना कोई भी पुरुष अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर सकता, क्योंकि नारी और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज का हमारा विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में यदि बेटियां बढ़ेंगी पढ़ेंगी तो हमारे देश का कल्याण होगा, क्योंकि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो वो दो घरों को शिक्षित करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था कि बालिकाओं के अस्तित्व को सुरक्षित करना और शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस योजना के माध्यम से बेटियों का जीवन स्तर में सुधार और उनका भविष्य भी लक्षित किया गया था। आगे देखा जाता है कि मध्य युग में हमारे देश में नारियों के साथ बहुत अत्याचार किए जाते थे। यदि नारी जाति इतना सा भी वैदिक धर्म के बारे में सुन लेती थी या कुछ भी अच्छे विचार सुन लेती थी तो उनके कानों में कांच पीस के डाल दिया जाता था। इन्हीं अत्याचारों के बीच में हमारे देश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने नारियों को झंडे के समान स्थान दिया। हम मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्ते न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र क्रियाफला। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसीलिए हमें हमारी बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हमारे देश की बेटियों को मान मिलेगा तो हमारे देश का पतन भी नहीं होगा। यदि हम देखा जाता है सुना जाता है कि हमारी बेटियों के साथ अधिक दुष्कर्म दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसमें हमारी बेटियों की गलती देखी जाती है। क्यों हमारे बेटों की गलती क्यों नहीं देखी जाती? तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अच्छी बने तो हमारे देश के बेटों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। हम आशा तो करते कि हमारी बेटी सीता बने, मैत्री बने, गार्गी बने, तो हमारे बेटों को भी राम जैसा पुत्र बनना पड़ेगा। एक किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, क्या कुछ नहीं कर सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, क्या कुछ नहीं कर सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंक मंच स्वधर्म राज्य सब कर चुकी सुकुमारियां। हमारे देश में गार्गी, मैत्री, मदालसा जैसी अनेक ऋषिकाएं हुई हैं, जो अपने पुत्रों को ऋषि बनाकर देश के उच्च शिखर तक लेके गई हैं। माता मदालसा तो अपने पुत्र को ऋषि बनाती है और गोद में लोरी सुनाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन होसी संसार माया परिवर्जित होसी। अर्थात तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, शरीर नहीं आत्मा हो, तुम देश का उत्थान कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे देश की बेटियों को यदि सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, तो हमारे देश की बेटियां कुछ करके दिखाएंगी। अंत में मैं अपनी 4 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी जिंदगी में रोज करिश्मा क्यों नहीं होता, मेरी जिंदगी में किसी रोज करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं रोज जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता, मेरी जिंदगी के कितने रिश्तेदार हैं, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। अर्थात हमारी बेटियों को सम्मान मिले, मान मिले और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
डॉक्टर रंजीत सिंह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बोलेंगे। रंजीत, आर यू देयर? रंजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको पार्टिसिपेंट्स में तो नहीं देख पा रही हूँ। I think he's not in the meeting. With the permission of jury, shall we move to the next participant? Yes, बेटा आप फिलहाल चलिए आगे. When he can join back, तब इनको चांस दे. Okay, ma'am. Thank you very much. The next speaker is Bindya Verma. Bindya Verma, she'll be speaking on Skill India. Skill India. Bindya, I can see you in the meeting. Yes, please put your video on. नमस्कार, मेरा नाम है बिंदिया वर्मा। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अखनूर से हूँ। आज मैं Bindya, you are not supposed to disclose the name of your college, but please put your video on. We cannot see you. मैम अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। Yes. Now you are visible. You can start now. ओके। तो आज मैं डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़कर रखना तथा हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना। इस योजना में सरकार ने कुल 1,13,000 करोड़ रुपए तथा देश की बड़ी कंपनियों द्वारा कुल 4.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। 2018 के बजट में के अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। सरकार इस प्रोजेक्ट के द्वारा साल 2019 तक पूरे भारत में इंटरनेट का जाल बिछाकर डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, जिसमें बातनेट द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से हर एक तक पहुंचाना, देश के किसानों को मिट्टी, मौसम के बारे में बताना और डिजिटल विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक जगहों पर 2.5 लाख करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना, सरकारी विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदलना, मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना तथा इसके द्वारा डिजिटल भुगतान, दूर दराज के क्षेत्रों में बीओपी केंद्र खोलना आदि का लक्ष्य रखा था। सरकार के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। जिस देश में 2.5 करोड़ आबादी है, वहां इंटरनेट की बुनियादी जानकारी देना भी एक बड़ी चुनौती है। हर आंकड़े ऑनलाइन होने के कारण साइबर अपराध का बढ़ना, ऐसे अनेक चुनौतियां हैं। इस समस्या को सरकार को निपटने के लिए जल्द ही कदम उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद। Thank you, Bindya. Next, we have Ms. Sudha Sharma. She'll be speaking on Skill India. Sudha Sharma. Hello, ma'am. Audible. Okay. Good afternoon. I'm Sudha Sharma presenting my views about आपकी Skill वीडियो India. नजर आपकी वीडियो ऑन नहीं है बेटा। Put your video on. मैम अब आ रही है? आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं। Yes, yes. Now visible. चलिए, Okay, you ma'am. can start. Good afternoon. Visible now, बोलो। मैम अभी आ रही है वीडियो? आई थिंक इधर स्टॉप हो गई। No, we lost your video. Yes. Again lost. Okay, ma'am. Ma'am, now? Start. Hello, ma'am.
Yes, beta, you are visible. Start now. Oh, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon. I'm Sudha Sharma presenting my views about Skill India. According to the Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate reached 34% among the 20 to 24 years old in the first quarter of 2019. It was 37.9% among the urban laws. If 8 million new job seekers enter the job market every year, in 2017, only 5.5 million jobs had been created and the situation is worsening. According to the last 2018 periodic labor force survey, the unemployment rate among the urban 15 to 29 years old was 23.7%. Still Indian unemployment. This pervasive joblessness is mainly due to the poor training of the youth, as only 7% of the people surveyed in the framework of the periodic labor force survey declared any formal or informal training. The current data suggests that only 2.3% the workforce in India has undergone formal skill training as compared to the 68% in UK, 75% in Germany and many more. On the other hand, according to the recent survey, 48% of Indian employers reported difficulties filling job vacancies due to skill shortage. Many initiatives taken by our government, some of them Skill India. Skill India programs that aim to train a minimum of 300 million skilled people by the year 2022. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, a dimension of Skill India, under which the training fees were paid by the government. In 2014, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was created to harmonize training processes, assessment, certification, and outcomes, and crucially to develop ITI, the building blocks of this endeavor. Shortcomings in the desired outcomes. The target of Skill India was to reach out 300 million young people by 2022, but only 25 million had been trained under this scheme by the end of 2018. This is partly due to mismanagement and partly due to the not spending available funds because of lack of candidates. Even those who have been trained under Skill India and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is unable to find jobs. The number of those who have been benefited from the Skill India scheme has increased from 350,000 in 2016 to 17 to 1.6 million in 2017 to 18. But the percentage of those who could find a job upon completion of their training has dropped from more than 50% to 30%. Under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, only 15% of those trained got a job. Many challenges have been faced, some of them insufficient training capacity, low interest rates, low student mobilization, employers' unwillingness, lack of entrepreneurship skills. While the government expected that some of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana trainees would create their own enterprise, only 24% of the trainers start their business. Out of them, only 10,000 applied for Mudra loan. Way further, enhanced expenditures on education and training. Government allocation for school education has declined from 2.81% of the budget in 2013 to 14 to 2.05% in 2018 to 19, which is further alarming situation. Evaluation of training institutes. National Skill Development Corporation should also develop some techniques to evaluate the performance of training institutes and encouraging them to perform better. Skill survey. Survey can be conducted to find the exact skills requirements from the employer. India needs to learn from technical and vocational training in China, Germany, Japan, Brazil, and Singapore, who had similar challenges in the past. Along with learning from its own experience to adopt a comprehensive model that can bridge the skill gap and ensure employability of youth. Thank you and have a nice day.
Next, we have Ms. Gunjan Rajput. She'll be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Gunjan. I think we should move to the next speaker. Next, we have Sujagya Sharma. She'll be speaking on Digital India. Sujagya? Ma'am, am I visible? Yeah, you are visible, but please, your face is not that visible to us. Please align the camera accordingly. Yeah, it's okay now. Is it Yes, okay now? Sujagya? Yeah, I it's start? okay. Yes, please. Honorable Prime Minister has rightly said that from snake charmers, we are now a nation of mouse charmers. Our youngsters are shaping the world with just one click of mouse with their feet in IT sector. Namaskar. My name is Manisha Sharma, and today I'm going to speak on topic Digital India. As the Ministry of Electronics and Information Technology, it is a flagship program of the Government of India with a vision to transform India into a knowledge economy and digitally empowered society. It aims to redress the grievance of an underprivileged section of the society using the technology that is affordable, developmental, as well as inclusive. Digital India stands on various pillars. Some of them are e-governance, e-granti, early harvest programs, IT for jobs, broadband highways, and many more. Digital India has experienced a complete transition in all the sectors of the economy. Gone those days when one has to stand in long queues in order to make payment. Digital has experienced a digital revolution in financial sector. Now, more than 50 lakh software developers are working in India. Today, India has its indigenous, huge, secure, and safe digital payment platform, that is Bhim UPI. There is also a behavioral change among people, which is evident when you go to a street vendor and he would ask you to scan the QR code in order to make digital payment. Keeping in view this flagship program, our Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, has started presenting budget via tablet in order to go digital and paperless. Father of nation, Mahatma Gandhi, has said that future of India lies in its villages. So agricultural sector has also faced digital reform. In agricultural sector, farmers are aiming to double their income by 2023. Technologies like artificial intelligence, National Agricultural Market, Internet of Things, GPS, and many more. Thus, agricultural sector has now transformed to agri-tech sector with digital farmers at its core. In health sector, Digital India has made huge strides. Technological solutions like Arogya Setu app for tracking corona infections and COVID app for vaccination are a matter of pride for India. Digital India is also witnessing shift to e-governance. Apps like Umang have placed 307 government services like tax payment, insurance, license, and step. So we can say that e-governance is true realization of democracy in India, as the power of governance is in the hands of common people, and this has made government more transparent as well as accountable. As Sanjay of Mahabharata could oversee what is happening in the battlefield, sitting in his chair, so we can do. We can experience events taking miles away with the help of these virtual platforms. Defense sector is also getting digitalized with advent of drones, unmanned aerial vehicles, self-guided bullets, unmanned tanks, aerial photography, etc. But despite of huge success, many challenges are being faced by Digital India. These are challenge of cyber security, cyber bullying, trolling, technical glitches, and
digital divide. But with adaptation of suitable measure, these challenges could be redressed. At last, I would like to say, I see technology as a means to empower and as a tool to bridge the gap between hope and opportunity. This is why Digital India is India's resolution. Digital India is 21st century slogan of India's strength, Atmanirbhar India. Thank you and thanks for being a patient listener. Jagya. The next participant is Miss Muskan Thakyal. She'll be speaking on Beti Bachao Beti Padhao. Muskan, please respond if you can hear me. I can't see you in the participant list. There is one participant, Muskan Chib, but there is no Muskan Thakyal. GD members, can we move to the next speaker? Please. Next speaker is Manisha Devi. Manisha Devi. Yeah, she is there in the meeting. Manisha, can you hear me? Yes, ma'am. Put your video on. Good afternoon, everyone, respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. I You are am not visible. Manisha, you are not visible. Your video is off. Please put it on. Ma'am, bye. Yes, yes, it's visible Good, now. Good afternoon, everyone, respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. I am Manisha, and I am here today to speak about an important topic, Beti Bachao, Beti Padhao. It is event from the news. If you are keeping tabs about our nation, that girls are excelling in every department. They are scoring the highest rank in the countrywide examination like medical and engineering, civil service. In the sports world, girls are number one and bringing Olympic medals. And they are even in decision making positions like CEO of head of department. All these goes to show that once given a chance, they will outgrow even than man. And even with this knowledge, some girls are deprived of this opportunity and considered unworthily just because of their gender. This unfair treatment is a ongoing injustice the society has ascribed to since May year ago. Girls are killed due to fear of drive, and unfortunately, if their life become worth that animal with one education and safety or security. Society and India format must realize that the world has moved on and they should to from this age old pursued that only are only fit for marriage, because that is not the truth. The Prime Minister of our country has started this step of protecting and educating the girls has Beti Bachao Beti Padhao to attempt to fight against these untrue norms. We must be aware that when a woman is educated, the generation to come after her are bound to be independent and educated too. And in this way, the country will move ahead in the right direction with great force. Thank you. Thank you, Manisha. Speaker is Ishika Sharma. She'll be speaking on Beti Bachao Beti Padhao. Ishika, are you there? Ishika. No, she's not in the meeting. If you are there, please respond. So she is not there.
The next speaker is Anmol Sharma. She'll be speaking on Swachh Bharat, Swasth Bharat. Anmol. Anmol, your voice is echoing. I think you are speaking from a very far distance. Anmol, beta, your voice is echoing. We are not able to hear. You remember? Can you hear her clearly? It's not Yes, you are properly audible, but not properly. Your voice is echoing. Ma'am, can I start? Ask her to shift Ishika her Sharma. अनमोल शर्मा बेटा आपकी आवाज इको कर रही है, क्लियरली नहीं आ रही है. आई थिंक यू आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम योर डिवाइस. प्लीज मूव योर डिवाइस क्लोजर टू योर माउथ सो दैट वी कैन सी यू. You remember? Please respond. No, not clear. No, not at all clear. I think She she should please. shift her face. Shall I put you on the last? Yes, ma'am. Okay, Anmol, you will be in the last. Ma'am, can I start my? Ishika Sharma. Ishika, you are there? Yes, ma'am. Where were you when I announced your name? मैम नेटवर्क इशू था, मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका था. But I can't see you. You are speaking with which name? Ishika. There is no Ishika in the list. मैम मेरे फोन की एक्चुअली बैटरी लो हो चुकी है, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर के फोन से ज्वाइन की है. Phone say, what's the name of that phone? You are joined by which name? Manisha Devi. Devi. Okay. Put your video on. Am I visible? No, you are not visible. ये गुरप्रीत ये कौन सा कैंडिडेट है बेटा? Ma'am, she is Ishika Sharma, serial number 29. So why is saying Manisha Devi? And she is saying that she has joined with somebody else phone. Okay. Am I audible? Yeah. You are sitting with someone in your room? Or you are sitting alone? Ma'am, I am sitting alone. Why are you using the mask? Sorry, ma'am. Yeah. Okay. It's Ma'am, a good shall I habit. Yeah. You are Ishika Sharma? Yes, ma'am. Ishika Sharma, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Yes, please go ahead. आदरणीय चीफ गेस्ट और मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जीडीसी चिंदरा की तरफ से उपस्थित हुई हूँ. मैं आज आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ. शुरू होने से ही पहले खत्म कर दी कहानी मेरी. शुरू होने से ही पहले खत्म कर दी कहानी मेरी. तुम पर ना कोई बोझ मैं बनती, कर्ज चुकाकर शादी मेरी. तुम पर ना कोई बोझ बनती, कर्ज चुकाकर शादी मेरी. आई इस जग में मैं बिन सोचे क्या शहर मेरा. आई इस जग में ना सोचे बिन शहर मेरा. सुना था इंसान है बसते पर टूट गया भ्रम मेरा. क्या खुशियां मिल जाएंगी जीवन खत्म करके मेरा. क्या खुशियां मिल जाएंगी जीवन खत्म करके मेरा. भूल नहीं ये बात मगर पर तू औरत से ही है जन्मा. भूल नहीं ये बात मगर पर तू औरत से ही है जन्मा. पूछो किससे ये सवाल मैं. पूछूं किससे ये सवाल मैं. अगर बेटी होना गलत है तो बेटी क्यों ही बनाई थी. अगर बेटी होना गलत है तो बेटी क्यों ही बनाई थी. हमें हमारे देश और संस्कृति पर हमेशा से गर्व है. हम हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं. जिन लोगों को दुनिया में कहीं स्थान नहीं मिलता उन्हें भारत में गले लगाया.
ऐसी महान संस्कृति विरासत होने के बावजूद भी हमारा देश एक ऐसी बुराई है जो हमें हमारी नजर पूरे संसार के सामने नीचा करने पर मजबूर कर देती है। वो बुराई है पुरुषों की तुलना में स्त्री को द्वितीय दर्जे पे स्थान देना। वो बुराई है पुरुषों की तुलना में स्त्री को द्वितीय दर्जे के स्थान देना। हमारा समाज इतना ज्यादा पुरुष प्रधान हो गया है कि आज कोई बेटा नहीं चाहता। वर्तमान समय में अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में पता लगाने की सुविधा आसानी से हो जाती है, जिसे मारकर कन्या भ्रूण हत्या के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए आज के समय में यह आवश्यक है कि अंधविश्वास मान्यताओं एवं प्रथाओं को शहरी तथा ग्रामीण विभागों में फैली है, उन सबको खत्म कर दिया जाए। हमें लोगों को सजग और सचेत करना है और कहीं पर भी भ्रूण हत्या की हो रही हो तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करनी है। अंत में मैं अब आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटी भार नहीं आधार है। बेटी भार नहीं आधार है। जीवन है उसका अधिकार, जीवन है उसका अधिकार। शिक्षा है उसका हथियार। बढ़ाओ कदम करो स्वीकार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। धन्यवाद। Participant is Anmol. Are you ready? Anmol and Vishesh, both of you are ready? Any one of you can speak. Yes, ma'am. Yes, Anmol. Ma'am, am I audible now? You are visible as well as audible. Yeah. Anmol, speak. Video lost. We lost your video. Yes. Go ahead. Yeah. Ma'am, am I audible now? Beta, you are audible. Hello. Yes, you are audible, बच्चे. Hello, ma'am. Yes, you are audible. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? Ma'am, can you hear me? Yes, Gurupreet ji, you are audible. I don't think Anmol is able to hear you. Not able to hear me. Anmol, can you hear me? There is some internet problem at your end, Viche. Just check it out. Until then, we can call the next participant. Anmol, are you moving? We are not able to hear you, beta. So I'm calling the next participant. You resolve your issue. Then we'll call you. Yes, yes. As well as your audio. क्या बोल रहे हैं बच्चे? You please speak at the end. Let the others speak. We have paucity of time. I would now ask Srishti call from Nehru Yuva Kendra. Srishti, are you there from Nehru Yuva Kendra? I cannot see Srishti. Nisar Sahab, are you there? Yeah. Sir, Srishti has not joined. ओके मैं इसे कंफर्म कर लूंगा, तब दूसरे को बुला लीजिए मैम. जी. Now we have Mandeep Kaur.
Mandeep Kaur, she'll be speaking on Digital India. Mandeep, I can see you in the participant list. Please put your video on if you can hear me. Ma'am, I had on my video. We can't see you. Yeah. We can't see you, beta. Video nahi nazar aa rahi. Yes. Yes, you are visible now. Huh? Mandeep, go ahead. 94197. निसार साहब, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए. May I start? Mandeep, yes, we can hear you. You can start. Okay, ma'am. A program to transform India into a digitally empowered society and knowledgeable economy. A very good afternoon to one and all present here. I, Mandeep Kaur, is here to express my views on the topic Digital India. Digital India is a campaign launched on 1st July 2015 by India's Prime Minister Narendra Modi in order to ensure that the government services are made available to citizens. By that, the government services are made available to citizens by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity or making the country digitally empowered in the field of technology. Its motto is Power to Empower. Its objective is connecting rural areas with high speed of internet and improving digital literacy. Vision of Digital India program is increasing growth in areas of electronic services, products, manufacturing, and job opportunities. It is both enabler and beneficiary of other Government of India schemes such as BharatNet, Make in India, Startup and Stand Up India, industrial corridors, etc. Digital India program has centered into two key areas, which are as follows. Digital infrastructure as a utility of every citizen. Secondly, governance and services on demand. And lastly, not the least, last but not the least, digital empowerment of citizens. Digital India initiatives are as new digital services like Bharat App, Bharat Pay, Digital Locker, e-education, e-health, e-shopping, National Scholarship Portal. Umang app includes services as Digital Locker, Bill Payment System, Swachh Bharat Mission mobile app. E-hospital application provide online registration, online payment, availability of blood online, etc. Due to Digital India program, a black money eradication helps, facilities to digitally empower citizen helps, and many positive outcomes have come from Digital India programs, which are concluded as this program has been favored by multiple countries, including US, UK, Canada, Australia, South Korea, Singapore, etc. And the leaders from Silicon Valley, Sanzon, California expressed support for Digital India during PM's visit in September 2015. Facebook CEO Mark Zuckerberg changed his profile picture in support of Digital India and started a chain on Facebook and promised to work on Wi-Fi hotspots in rural areas of India. As on 28 December 2015, Panchkula district of Haryana was awarded being the best as well as the top performing district in state under Digital India campaign, and we hope of completing mission of making India a digitally active in the very coming future, and the making and the hope of completing mission of making India digitally active is to be possibly fulfilled in the coming future. Thank you. Very much, Mandeep. Now, Anmol has joined us from a different device. Anmol, can you hear me? Yes, ma'am. चलें, अपना वीडियो ऑन करें. वीडियो ऑफ है बेटा. हाँ बस बस. Am I audible now? Yeah, you are audible as well as visible. Yeah, start. स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है. जी हाँ, भारत के राष्ट्रपिता महान स्वतंत्रता सेनानी ये महात्मा गांधी जी का ही कथन है. मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है.
यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यानी अनमोल शर्मा का सादर नमस्कार। जरा सोचिए, स्वतंत्रता का एक सूरजमुखी खिलाने के लिए भारत के कितने चमन उजड़ गए, कितने बलिदानों के बाद पाई है हमने स्वतंत्रता। अब ये सोचिए कि यदि स्वतंत्रता से भी ज्यादा है तो अभी हमें कितना सफर और तय करना बाकी है, क्योंकि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी आज तक हम अस्वच्छता की परतंत्रता से नहीं छूट पाए हैं। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत है और स्वस्थ भारत ही विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। आंकड़ों की बात करूं तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना 400 बच्चे डायरिया की वजह से मरते हैं, कारण अस्वच्छता। वहीं अगर कचरा यूं ही फैला रहेगा तो वह जानलेवा बीमारियों के लिए न्योता है। जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलेरा, पोलियो, डेंगू, मलेरिया, ये सब अस्वच्छता के ही तो नतीजे हैं। साफ सफाई की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल 277.1 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। इस कचरे का लगभग 77% खुले ढेरों में जाता है, 18% खाद में बदला जाता है, जबकि बस 5% ही रिसाइकल हो पाता है। हमें बस इन्हीं आंकड़ों को बदलने की आवश्यकता है। बताइए, अस्वच्छता का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जी हाँ, कचरा। तो क्यों ना हम कचरे को पैदा होने ही ना दें। कचरा यानी कबाड़, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, परंतु सड़कों के किनारे जो ढेर लगे रहते हैं उसमें तो सारा अपनी जरूरत का सामान है। उस कचरे के ढेर का अगर आप निरीक्षण कीजिएगा तो आपको मिलेगा रसोई घर का गीला कचरा, जिससे उत्तम खाद बनाई जा सकती है। आपको मिलेगा सूखा कचरा, प्लास्टिक, धातु, कांच वगैरह वगैरह। इसे हम रिसाइकल और अपसाइकल करके बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुंबई में रहने वाली मनीषा नारके हमारे लिए एक उदाहरण है। टेट्रा पैक कार्टन्स जो कि दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाते, इन्हें रिसाइकल करके स्कूल के बच्चों के लिए डेस्क बनाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि निरंतर कचरे को मिटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जरूरत है तो बस देश के हर नागरिक की जागरूकता की, हर नागरिक के सहयोग की। अस्वच्छता की लड़ाई के खिलाफ हमारा हथियार है जागरूकता। जागरूकता की तलवार से ही हम अस्वच्छता का नाश कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो किनारे खुद नजर आएंगे। तो हमें बस जिस दृष्टिकोण से हम कचरे को देखते हैं उस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये हमें समझना होगा कि घर का कचरा मैं साथ की गली में, पास की नदी में या बगल के ढेर में फेंक कर स्वच्छ भारत नहीं बना सकती। मेरी नजर में जमीनी स्तर पर पंचायत और नगरपालिका के पास ऐसे साधन होने चाहिए जिससे आम जनता को कचरे के प्रबंधन के साथ वे अपने साथ जोड़ सके। चाहे वह गीले कचरे से खाद बनाने की बात हो या सूखे कचरे के रचनात्मक इस्तेमाल की बात हो, पंचायत घर और नगरपालिका अपने आप में छोटे छोटे उद्योग बन जाएं। मेरे सपनों का भारत तो वही है जब हर एक गांव, हर एक शहर अपने कचरे को कचरा ना बनने दे। व्यर्थ चीजों से हम कुछ सार्थक बनाएं, कुछ रचनात्मक बनाएं, मिलजुल कर आगे बढ़े और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। अंत में गांधी जी के शब्दों में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो बदलाव आप अपने आसपास लाना चाहते हैं उस बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Anmol. Now we have Vishesh. He'll be speaking on Swachh Bharat, Swasth Bharat. Vishesh. Am I visible, ma'am? Yeah, beta, you are visible. Sorry. Yes, you can start. यदि निकले सफाई करने, one second, ma'am, one second. यदि निकले सफाई करने, संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम। निकल पड़ा था डांडी तक जो, वापस वही उमंग चले, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले।
Good afternoon. I am Manisha Sharma, and today I am here to put forth my views on Swachh Bharat, Swasth Bharat, that is Clean India, Healthy India. In my opinion, there is an urgent need to change the thought pattern of people of India if we want to get a better future, not only for us but for the generations coming after us. A clean India with better health conditions. There are some basic goals we should talk about: having clean water, using clean toilets, eliminating open defecation, keeping our surrounding clean, and properly disposing liquid and solid waste. Cleanliness is not something we are initiating new. As a culture, we have understood it from our parents and grandparents. Just like we keep home clean, we need to look after our bigger home, India. Today, we have to change our habits to change our country. I would like to recommend the improvement of public and private sectors through NGOs, which could improve the efficiency of solid waste management. Solid waste should be segregated at source. Public awareness should be created, especially at primary level. Littering of solid waste should be strictly prohibited in cities, towns, and urban areas. Today, let's take the idea of Brazilian design studio Rosenbaum. They started helping people decorate their houses reusing plastic bottles. It beautifies your house, and the problem of plastic bottles is also solved. Take another idea. Colombia is giving rewards to people for giving back their plastic waste. Because who doesn't like winning lottery? This encourages people to give back their waste. The idea of rewards for recycle is also being tried in India, and Mumbai is the first to get Swachh Bharat recycling machine. India has a long history of leaf plates. Even other countries are taking the advantage of our tradition. Why can't we do the same? Leaf Republic, a company in Germany, takes inspirations from India. They produce plates made of leaves, which solves the plastic menace. I would particularly like to mention the zero waste system, which was founded by PhD chemist Paul Palmer in Oakland. It is a philosophy that encourages the redesign of resource life cycle so that all products are reused. We need to move to a zero waste system. Don't say that, oh, there's nothing I can do about this. Yes, you can. Every one of us can stand up and just take a little bit of social responsibility and say, I may not be the richest or the most influential person, but at least I can influence my own environment and people around me to better habits. We need to make it clear to people how cleanliness makes the difference. Good health can be achieved through cleanliness and hygiene. That means Swachh Bharat will eventually lead to Swasth Bharat. I would like to end my words here with this inspiring quote by Mahatma Gandhi. Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it. Thank you. Okay. Do we have Srishti Kaul with us? Srishti Kaul from Nehru Yuva Kendra. Nisar Saab, has she joined? I think she's not there. Then we have, do we have Ranjit Singh? Ranjit Singh? No. Gunjan Rajput? No. Muskan Thakyal? गुड आफ्टरनून मैम। Yes, good afternoon. मैडम मैं बेसिकली स्टेट डायरेक्टर के पास बैठे हैं, हमारी वेबिनार चल रही है मैडम सेक्रेटरी के और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, तो मैं वो भी अटेंड कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। Sorry, okay. You please go ahead with that. I'll manage here. Okay. So Ishika has spoken. Ranjit, Gunjan Rajput, Muskan Thakyal, they are absent from the meeting and would not be able to speak. Ma'am, here is a request to the respected jury members. We have 3 more participants. They are from a different college. I got their nominations later. With the permission of jury, if you allow me, then I would ask them to speak.
हेलो मैम, Yes. आवाज आ रही है? मैम मैं रंजीत हूँ। Krish Kundra. जी रंजीत हूँ मैं। मेरे दूसरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इसमें किया। आपने किस नाम से ज्वाइन किया है? कृष कुंद्रा के नाम से है, पर मेरा नाम रंजीत है। ये दूसरी फोन की आईडी है ना, दूसरे लड़के की। The permission of jury member. Ma'am, can we allow? नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल में अलो तो कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से आए, बट वो अपना नाम तो बता रहे हैं। अगर वीडियो ऑन कर दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जी मैम। Able to see you. Video is not on. Please put your video on. Yes, you are visible now. Speak, मैम please. वीडियो ऑन है। जी मैम नमस्कार। Respected jury members, he is Ranjit. He is Ranjit Singh, serial number 22. जी He is speaking. जी मैम। Speaking on बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Yes, please. जी मैम। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुम घटा मंडू कस्य बको बको बक बको वाको वको वुम वको विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु वह। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय एवं सम्माननीय गुरुजनों, महानुभावों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं और मेरे अग्रजों, अनुजों एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नम्र प्रणाम। आज के इस विशेष अवसर पर मैं रंजीत सिंह कक्षा आचार्य प्रथम वर्ष का छात्र आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं। यदि कोई मेरे से त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बेटी को एक शाप माना जाता रहा है, परंतु यह बात स्पष्ट है कि एक लड़की हमेशा समाज के लिए आशीर्वाद रही है और संसार में जीवन की निरंतरता का कारण है। हम बहुत से त्योहारों पर विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं, जबकि घरों में रह रही महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी दया महसूस नहीं करते। वास्तव में एक लड़की ही समाज का आधार स्तंभ है। यहाँ बेटियों को बचाने के लिए माता पिता की सोच को बदलना ही पहली जरूरत है। उन्हें अपनी बेटियों के पोषण, शिक्षा, जीवन शैली आदि की उपेक्षा रखने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों को एक समान मानना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा। सभी नियमों और कानूनों को उन लोगों के खिलाफ सख्त और सक्रिय होना चाहिए जो लड़कियों के खिलाफ अपराध में शामिल है। केवल तभी हम भारत के अच्छे भविष्य के बारे में सोच और उम्मीद कर सकते हैं। महिलाओं को भी मजबूत होना पड़ेगा और अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। उन्हें महान भारतीय महिला नेताओं जैसे सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि से सीख लेनी होगी। इस संसार में महिलाओं के बिना सब कुछ अधूरा है। मेरी आप सभी से नम्र प्रार्थना है कि कृपया आप सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्या बचाओ पर अपने भाषण में कहा था कि भारत का पीएम आपसे बेटियों के लिए भीख मांग रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया और हमें इस अभियान को सफल बनाने में उनका सहयोग करना होगा। मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रकट करना चाहता हूं जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहे थे। उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बेटियों का जीवन बचाने के लिए आपसे भीख मांग रहा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास में प्रिंस नामक एक लड़का कुएं में गिर गया और पूरे राष्ट्र ने उसके बचाव कार्य को टीवी पर देखा, लेकिन लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय के विषय में कोई नहीं प्रतिक्रिया करता। ऐसा क्यों? हम 21वीं सदी के नागरिक कहलाने योग्य नहीं हैं। यह इसलिए क्योंकि हम 18वीं शताब्दी के हैं। उस समय लड़के के जन्म की तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी जाती थी। लड़कियां तो लड़कों से अच्छा प्रदर्शन करती हैं। यदि इसका प्रमाण चाहिए तो परीक्षा परिणामों से लेकर अन्य कार्य क्षेत्रों को देखें। लोगों को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन एक बार ये तो सोचो कि बिना बेटियों के को पढ़ाए यह कैसे संभव है। अतः नारियों के विषय में आचार्य महर्षि मनु के द्वारा मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात यहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का भी वास होता है। मैं यह बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस तथ्य को अगर लोकतंत्र में लागू किया जाए तो लोकतंत्र का बहुत ही सम्मान होगा। सृष्टि का आरंभ
नारी से हुआ है, इस बात को हम पुरुष भूलकर नारी को नीचा दिखाते रहते हैं, नारी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अतः स्त्री जाति का मान सम्मान करना चाहिए और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए एकजुट होकर हमें उनका साथ देना चाहिए। यदि घर में बेटी ही सुरक्षित ना हो तो पुरुषों को भी जीने का अधिकार नहीं। अतः बेटी के बिना संसार अधूरा है। इस विषय में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। नानी वाली कथा कहानी अब जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। सोने की चिड़िया बोली है बेटी युग की हवा सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अतः येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, तेमर्त्य लोके भुविभार भूतां निश्चय रूपेण मृगाः चरन्ति। धन्यवाद। Sanjeev, जी मैम, very much. धन्यवाद मैम। Now request have few students. Three students, sorry. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I have also registered. Name? Priyanka. मैम ये हमारे गवर्नमेंट एसपीएम और कॉलेज कॉमर्स से 3 बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। वो सुबह से सब बच्चों को सुन भी रहे हैं, तो प्लीज अलाउ कीजिए वन बाय वन। दीपाशा है और इसके साथ आयुषी है और प्रियंका है। Response from the jury. Sir, sorry, I'm extremely sorry. Okay, I would now request our esteemed jury members to please compile their evaluation sheets and sign it and send it to me after taking a snapshot. I am highly thankful. तो मैम इनको परमिट किया आपने, नहीं किया, ये जो एसपीएमआर कॉलेज से हैं? As I didn't receive any response from the jury members, so I am considering कि they are not willing. तो मैम वो बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, या तो उनसे बुलवाइए। अब उन्हीं में से एक जो है हमारे निसार सर ने तो ओके कर दिया था, अब जो ज्यूरी मेंबर है Nisar sir is not the part of jury members. ठीक है, मैंने माना नहीं है ज्यूरी मेंबर। जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उनसे कुछ तो बोले तो सही, सुबह से बच्चे बैठे हुए हैं। ज्यूरी मेंबर्स प्लीज आप 10-15 मिनट निकाल लीजिए, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। Ma'am, we'll hear them out. If others have no problem, we can hear them out if they are waiting. Doesn't matter. 3 more to go. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay, if it is okay with others, I have no issue. We can hear them out. Let them speak if the others are willing. I have no issues. Let others also vote for this thing. Yeah, Gurpreet ji, allow them to speak. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much.
I would now ask Dipasha to speak. Dipasha, I don't know the topic on which she is going to speak. Dipasha, please put your video on. Good morning, ma'am. Am I audible and visible? Yeah, you are audible. Yeah. Thank you so much for allowing us to speak. Incredible India, an organization started in the year 2002, is an international marketing campaign by the Government of India to promote tourism in India to a global audience. The title was officially branded and promoted by Amitabh Khan, the former secretary under the Ministry of Tourism. This land is your land, and this land is my land. From the Himalayas down to Cape Comorin, from the Arabian waters to the Bay of Bengal, this land was made for you and me. The above lines, the refrain of a popular song, still remain etched on my mind, and I often remember my school days when, as students, we used to sing this song with our heads held high and shoulders squared on Independence Day. A very good afternoon to all the esteemed jury members and my dear friends present here. Today, I, Dipasha, is going to speak on the topic Incredible India. Incredible indeed is India, the land of a birth. Its unity and diversity is arresting, making it a hotspot for tourists. The color that is India, the culture, the varying landscape, the language and dialect spoken, the folklore and song and dance in short. Her myriad hues make India a unique nation. Where else but in India can you find the sleek Audi and the humble bullock cart ambling side by side? Or a quaint village laid back in time, juxtaposed against a city of skyscrapers like Mumbai or a metro like Delhi? India is my country. All Indians are my brothers and sisters. These, the opening lines of a national integration pledge, spell out the oneness that is India. India is a land of blue lagoon, swaying palms, snow-capped mountains, plush green forests. Diversity in India can be witnessed in food habits and clothing or attire. We have North Indian cuisine, Mughal cuisine, and South Indian cuisine, where Gujarati food is all vegetarian, Bengali food mainly comprises of fish curries. People from India, North India consume mainly wheat, and those in South are rice consuming people. Right here, right now, here only on this platform, we have people from different culture, different languages, different religions. We have Kashmir, where there are beautiful lakes and gardens with historical history. We have Kanyakumari along with the sea waves. The beautiful Taj Mahal, Ajanta Caves, Golden Temple, Qutub Minar, Char Minar, and the many unlimited and marvelous monuments in India. The backbone of tourism in India, and hence the backbone of incredible India. But besides all these variations, all Indians sing the same national anthem, rejoice together when the country wins the cricket match. Even history is a witness that people of all different cultures and religions participated in the country's freedom struggle. This unity in diversity is the hallmark of India's uniqueness. The fact that India absorbs all this variation into itself is very mesmerizing. In the last, I would like to say that in India, we celebrate the commonality of major differences. We are a land of belonging rather than of blood. Thank you so much for hearing me. Have Priyanka. Yes, ma'am. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, and the mother of history, and the grandmother of legend, and the grandmother of the tradition. This is the word of Mark Twain. India is the land of largest number of festivals, largest number of 1600 languages, and the first university, Takshila, Ayurveda, surgery, human calculator, chess, algebra, trigonometry,
yoga, and many more. India stretches from the eternal snows of Himalayas in the north to the Peninsula of the south. Incredible India is the international marketing campaign initiated by the Government of India to promote tourism in India in 2002 to the global audience. The campaign projected India as an attractive tourism destination by showcasing different aspects of Indian culture and history like yoga and many more. India also a land of diverse climatic conditions. The four seasons of summer, autumn, winter and spring prevails throughout the year in the many parts of the country. There are many tourism destinations like Agra Fort, Taj Mahal was built in the reign of the Mughal Emperor Akbar, and Agra included a number of notable monuments like Khas Mahal, Sheesh Mahal, Diwane Khas, Diwane Am, and Moti Mahal. Taj Mahal is famously called the jewel of Muslim art in India, built by Emperor Shah Jahan in the memory of his favorite wife Mumtaz Mahal. The architecture wonder is hailed as symbol of love. Completed in 1653, this white marble Mughal architecture is also one of the seven wonders of the world. Sun Temple reflects Kalinga style architecture and is considered to be one of the largest Brahmin sanctuaries in India. Prosperous kingdoms of Vijayanagar, Hampi was the world's largest city, attracting traders from around the world, and the ruin of Hampi depicts the Dravidian art of art and architecture. The Sanchi Stupa is the oldest stone structure in India and were commenced by the Emperor Ashoka. The core was the hemi-spiritual brick structure built over the relics of Buddha and crowned by the chatra which symbolizes the rank. The Qutub Minar was built by first Mughal ruler of Delhi Sultanate, Qutubuddin Aibak. The rock shelter of Bhimbetka is the place where earliest traces of human life on Indian subcontinent were discovered. Western Ghats ranks among the top 8 world biological hotspot locations. Rani Ki Vav is well known for its step corridor, sculpture, and stone carving in the well. The heritage site is dedicated to Lord Shiva and is designed as an inverted temple divided into 7 levels of well and each serving its own important centers of learning. The Buddhist monastery having serving as an adobe of knowledge for 800 years, this university was discovered for formalized Vedic literature as far as in Tibet, China, Korea, Central Asia, and many more. Yoga is one of the 6 schools of the philosophy of Hinduism and is also a major part of Hinduism and its meditation practices. Swami Vivekananda kept in mind the lifestyle needs in current times, so he adapted the ancient wisdom of yoga into 5 basic principles, that is, proper exercise, asana, proper breathing, pranayam, proper relaxation, swasana,
proper diet, meditation, and proper thinking and meditation. The introduction of yoga to the West is often credited to Swami Vivekananda. He first came to United States of America in 1883 and was soon organizing world conferences on subject by describing yoga as science of mind. India was called the golden sparrow mainly because of natural and precious resources and the monsoon. India is one of the oldest civilization in the world We with have time limit of 4 minutes. cultural heritage. India represents the unity in diversity. This is India, our incredible India. Thank you. Thank you very much. I would request the participants to stick to the time limits. The last participant is Ms. Priyanka. Ma'am, I am Priyanka. I have given the speech. Ayushi, right? Sorry. Ayushi. Last participant is Ayushi. Ayushi. So she is not connected. She has lost the connection, sir. I cannot see her in the participants list. Thanks, ma'am. Thanks. Okay. Thank you very much, the jury members. I am extremely sorry on behalf of the administration that we could not. We actually fetched your time more than required, and I am thankful that you were available on a single call, that too at a very short notice for our program. I would now declare the end of this session. I would again request our esteemed jury members to compile their evaluation sheet, sign it, and send it to me after taking a snapshot. And the last, I would request Dr. Pervez Ahmed of GCW Parade for a formal vote of thanks. Pervez, sir? Yes, ma'am. Is I audible, ma'am? Yeah, you are audible. A very good afternoon to all. On behalf of Government College for Women, Parade Ground, Jammu, I take this opportunity to propose a vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this event, organized by our NSS unit in collaboration with Nehru Yuva Kendra Sangathan Jammu. At the outset, a sincere thanks to our respected jury members, Dr. Saranjit Kaur ma'am, Professor Meenu Mahajan ma'am, Mrs. Natasha ma'am, Dr. Kamna ma'am, and Mr. Tahir sir for taking time from your busy schedule and gracing the occasion. We are thankful to our respected principals, SP Saraswat sir, for their motivation and enthusiastic support. A special thanks to the organizing committee members, technical support given by BCA department, NSS program officers of different colleges for their support and coordination. Our heartfelt thanks to our participants from different colleges for active participation. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's event. Thank you all. Ma'am, over to you, Gurpreet ma'am. थैंक यू परवेज सर. मैं फिर से तहे दिल से हमारी ज्यूरी का थैंक्स कहना चाहूंगी और बहुत शर्मिंदा भी हूं कि टाइम बहुत ज्यादा लग गया. Actually, we were not expecting our participants to be so enthusiastic. I was having the list of students having only 2 participants, but later as collaborated by the youth ministry, they said that at least 3 students from every college. That's why extremely sorry for this glitch. Thank you, Meenu ma'am. Thank you, Natasha ma'am. Thank you, Tahir sir. Thank you, Kamna ma'am, and thank you, Sharan. It's okay, Gurpreet ji. We can understand. And thank you, ma'am. Thank you I very would much. also like to So I'm thank going all to of end this you for meeting. inviting me to be the part of this program.
मैम हम I आगे would भी also like जाएंगे to टूरिज्म thank डिपार्टमेंट. Yes, ma'am. Please go ahead. State College principal sir and the organizing committee for inviting and giving me opportunity to be the part of this program. So all students spoke very well, and it was very clear all of. Thank you, ma'am. It's our Ma'am, thank you pleasure. so much, ma'am. Asha ma'am, would you like to say anything? Ma'am, your mic is mute. Natasha ma'am, your mic is mute. Yes, ma'am. Yes, please. Ma'am, now am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you, ma'am. Thank you for calling me. All the children are very good. So was a really good experience for me also. So this type of events should have happened earlier also, but this is very good that this is happening. And thank you for calling me also on this event. I also thank the tourism people that they have given me this opportunity. They were telling me that some senior person should be there, so I opted myself only. मैं कहा, then they want any senior person, then I will represent. Ma'am, even your senior recommended your name, that you are very active in the field, and please ask Natasha ma'am. So it's our privilege that you are being with us. Hopefully next time we shall see you offline in our college. Sure, ma'am. Definitely. Thank you so Thank you, ma'am. Tahir sir, we would like to hear from you as well. Thank you, ma'am, so much for making me part of this great initiative, this great program. All the participants are really good. Like, it's very difficult to evaluate and give more marks and less marks. Such initiatives must be complemented, and your college and the Nehru Yuva Kendra is doing wonderful job in Jammu and Kashmir. And I would like to request you to continue such initiatives, as our Honorable Prime Minister is also very focused on this Skill India, like the entrepreneurship is being promoted. In fact, in the state also, the Honorable LG administration is very hard working, and they are putting their best for promoting entrepreneurship at the ground level. And all the students are very good and you beautifully managed it. I want to compliment for the success of this program. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. We will definitely call you soon to interact with our students. The career counseling cell of the college would love to hear you offline to interact with such a young entrepreneur. Jagdeep sir recommended me your name, and I'm highly thankful to Jagdeep. Please pay my thanks to him as well. Thank you very much. Thank you. Minu ma'am. Minu ma'am. Hello. Ma'am, please say a few words. We would like to hear from you. I would personally say thank you to Dr. Saraswat, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मीट का पार्ट बनने के लिए. It has been a wonderful initiative, and of course हमारा यूथ जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और वोट करता है, they are of course never aware of how the parliament works. Ultimately we are moving towards that. This has been a very good initiative. Students from different backgrounds, they spoke very well. And of course, they got an opportunity to learn from each other as well, because the score sheet is divided in 4 parts. So it's not only at times the speakers, they focus on one particular parameter. It is a good platform where from we can learn. I may have been very good with getting the data, but my articulation or my presentation, my demeanor during the performance also matters. This is a chance for the students to learn. ऑनलाइन होने के कारण कहीं कहीं थोड़ा सा ब्रेक आता रहा. I hope next time हम ऑफलाइन मोड में मिल पाएं, and that would be of course more meaningful and better for everybody. Thank you so much. The organizing team has done really well. I compliment you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Karanjit ma'am, are you there? Kamna ma'am. Actually, I called Kamna ma'am for Ayushman. For Ayushman Bharat, I'm extremely sorry, ma'am. There was not even a single participant on that. That is what I was wondering. Good afternoon, everybody. I am really thankful to the worthy principal, sir, for making us a part of this. Ayushman is really a big thing in J&K, but I'm really, really very sad that nobody actually pondered on it.
As you know, health is wealth and health is sabse pehle and everything uske baad. But it is okay. I am here to educate you and enlighten you on this. Go for your cards, get your golden cards made, and get your family secured with the health. This is also a scheme which is run by PM Sahab, and it is doing wonders in our state. And you, as you all know, it is a universal state scheme in our state, because in India, very few states are giving a universal coverage, and we are one of them. And we are doing tremendously good, and it is for you people. And being youth, you should know what the importance of health is. I am really happy. I heard almost, I could not catch up in the middle. I had some meetings lined up. I was on and off, but I listened to the major chunk. I went through. I'm really happy how our youth is aware of every single scheme which is launched by our PM. And in future, these things will definitely help them in getting jobs, in getting everything they can do with these schemes. These are for their help, these are for their benefit. And I'm really happy to hear that you know this, you are aware of it, and kindly make others also aware in your family, everywhere else, wherever you go. And I seriously thank you. You have put up a wonderful show. It was really nice to be with you, and next time I also hope to be with you offline. Thank you so much for giving me a chance. I assure you, we will have a separate seminar that to offline on Ayushman Bharat. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was pleasure being with you. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks to all the jury members again. Thanks to participants, my locally, if is left. Thanks to him or her as well. Thank you very much. So I'm going to end the meeting. Excuse me, madam. That's all from my side. Excuse me, madam. Yes, sir. Yes, madam. I'm Pranav Pandita. Yes, sir. Can I speak? Can I just take your 2 minutes extra? Pranav, sir. Okay, just go ahead. Hello. Am I audible? I can hear you, but I think most of the jury members have left. Okay, okay, yes. No problem with that. Okay. I'm a student of GGM Science College. So I had also enrolled in for the NYPF, but I can say due to some lower level of politics, or you can say